Goes hard at the ball, Basit. He looks equally good against spin and fast. He will try for a run or two while the power play is on. A big hit or somewhere. Oh, that's a good ball. Going deep in the crease, trying to cut it way close to the body. End of the over, 39 for none. जिसको कहते हैं सो फार सो गुड। बासित अली ने अपनी रेपुटेशन के लिहाज से एक मरतबा फिर अच्छी शुरुआत की है। टॉस जीत के डेरा मुराद जमाली की अच्छी शुरुआत ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए भी। दूसरी जानिब जुबैर भी साथ निभा रहे हैं 11-20 बना के, जबकि अब पेस को लॉन्च करने का वक्त हुआ चाहता है। मूसा खान गेंद करने के लिए आएंगे। 41 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। अपनी जगह पे खड़े खड़े फ्लैश करने के लिए गए थे, लेकिन बीट किया बैटर को। अच्छा स्टार्ट मिल गया डेरा मुराद जमाली को, और ऐसे के बाद इस पर बिल्ड करने की ज़रूरत है। इस तरफ से एक मरतबा फिर वो स्प्रिंग नज़र आया है इस गेंद में, जो कि बैट्समैन को मौका दे कि वो शॉट खेलने के लिए जा सकें, लेकिन फुटवर्क अहमियत रखेगा। गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे स्टार्ट के बाद विकेट थ्रो करने के साथ क्या कुछ हो सकता है वो सब हमने देखा इससे पिछले मैच में। बिल्ड करने की ज़रूरत है डेरा मुराद जमाली को ऐसी शुरुआत के बाद। और अब जो कनेक्ट मिला वो शानदार था। अपनी जगह पे खड़े खड़े खेले, लेकिन कंट्रोल में बैट को ऊपर से नीचे लाए, फौरन जमीन से मुलाकात करवाई, गैप में 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट है ये, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। पेस को इस्तेमाल किया है मूसा खान की को, क्विक हैंड्स हैं, ज्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया है, बाजुओं का शानदार इस्तेमाल किया, प्लेसमेंट भी कमाल की रही। काफी अच्छी यादें हैं जुबैर की इस ग्राउंड से। अकील 2014 में सेंचुरी बना चुके हैं लाड़काना के अगेंस्ट इसी ग्राउंड में, तो वो यादें होंगी। जैसे जैसे शॉट्स खेलते चले जाएंगे वो यादें ताज़ा होती चली जाएंगी। और जिस तरह ये बैटिंग कर रहे हैं, एक बड़ा स्कोर इंतजार कर रहा है इनका भी। एक मरतबा फिर मिस किया, लेकिन जो इन्होंने किया था आज से 9 साल पहले इसके बीच में, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिली है, तो ये एक स्टोरी तो हमारे सामने है कि आप 9 साल के बाद आते हैं और परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कितनी क्लब क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे, फिटनेस के साथ कितना आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि वो जो मोटिवेशन का एक अट्रैक्शन होता है इब्तिदा में, जवानी में, वो शायद आपके जहन से महव हो जाता है, और उसके बाद अपने आप को इस स्टेज के लिए तैयार रखना है कि जैसे ही मौका मिले फ़ौरन आप ग्रैब करें, वो बड़ा मीनिंगफुल रहता है। क्रेडिट जाएगा इनको कि इतने बड़े गैप के बावजूद लगे रहेगा, जैसे वो भी कल की बात थी, और वहीं से इन्होंने जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से इन्होंने इसको दोबारा से इस्तेमाल करने की कोशिश की। राउंड द विकेट आकर रोकने की कोशिश की थी ऐसे शॉट्स को, लेकिन ऑफ द बैक फुट एक और चौका, एक और मुलाकात और एक और शानदार 4 रन्स। इस बार बॉल थोड़ा करीब था जुबैर के, लेकिन इतने क्विक आर्म्स हैं ये, सिर्फ टाइम करते हैं। इसलिए पिछला बॉल थोड़ा दूर था, लेकिन ये थोड़ा करीब था, सिर्फ जैब किया है और पॉइंट और थर्ड के दरमियान से 4 रन हासिल किए। अच्छी बैटिंग है ये, पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रेशर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पे है। ये मिस कर रहे होंगे हारिस रऊफ को। इस मरतबा रोकने की कोशिश करने की ही थानी, और इन दी एंड इसको कामयाबी से कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। स्लिप हो गए थे रन मुकम्मल करते करते, और शायद बेहतर ही हुआ क्योंकि दूसरा हासिल करने की मौका नहीं था, लेकिन इससे बेहतर शुरुआत शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे डेरा मुराद जमाली के लिए। अभी भी 7 गेंदें पावर प्ले की बाकी हैं, 50 के दहाने पे पहुंच चुके हैं।
अच्छी फील्डिंग इस बार हसन नवाज की जानिब से, अच्छे फील्डर हैं लेकिन ये एरिया पसंद है इनको, ऑल्दो ज्यादा फुटवर्क नहीं, इनफैक्ट इस बार तो पीछे को फुटवर्क है। अच्छी फील्डिंग, ऐसे ही एफर्ट करते रहना होगा क्योंकि अब यहाँ इस बार क्वालिफाई किया है इन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी के लिए। महंगा रहा मूसा का पहला ओवर, 5 के बाद 49 बिना किसी नुकसान के डेरा मुराद जमाली। पिछले मैच में जो कि पहला मैच था आज का, उसमें हमने देखा कि नए बॉल से बहुत रन हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नया बॉल ट्रैवल कर रहा है, बहुत तेजी से बल्ले पे आता है और उतनी ही तेजी से निकलता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट टीम है, आप अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलना जानते हो तो यहाँ से स्टार्ट को कैपिटलाइज करेंगे। आप थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। अच्छा बॉल है ये, क्योंकि आपने देखा 170 180 अच्छा टोटल होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी, प्लान करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। इस फरमान का दूसरा ओवर है। अच्छी कोशिश किया, बांध के रखा बैट्समैन को। यह है ग्रुप बी के मुकाबले, जहां पर ग्रुप सी का सवाल है। ग्रुप चार्ली में रावलपिंडी ने फैसलाबाद को शिकस्त दिया। बिजनेस एंड की जानिब जा रहे हैं हम बड़ी तेजी के साथ इस पहले स्टेज के, और उसके साथ एबटाबाद बहावलपुर के खिलाफ जीतने में कामयाब रही है। आपको याद कराते चलेंगे 4 ग्रुप से, हर ग्रुप से 2-2 टीम्स निकलेंगी। यार अच्छी खबर ये भी आई कि आज हमने इस साल नेशनल T20 में आज पहली सेंचुरी भी बनी है। जिशान मलिक ने रावलपिंडी की जानिब से सेंचुरी स्कोर की। तो जैसे जैसे ये इस टूर्नामेंट चलता चला जाएगा बहुत सारे रन देखेंगे हम। उठाकर खेला और ऑफ द बैकफुट, दिलकश नजारा। क्या कुव्वत थी इस गेंद के नीचे आके जो रवाना किया बासित ने। गेंद ने बाहर जाकर ही दम लिया। खूबसूरत शॉट, 6 रन। ये बहुत ही खराब लेंथ है और जितना टैलेंट बासित में है ये मिस आउट नहीं करेंगे। और पेस भी थोड़ा तेज थी, सीखना होगा। देखिए हाफ लेंथ, ये बहुत इजी पिकिंग्स है। यहाँ पे बहुत दूर गया है बॉल, ये जल्दी सीखना होगा कि इस पिच पे कौन सी पेस और किस लेंथ पे बॉल करना है इस्लामाबाद के बॉलर्स को, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत रन ज्यादा करवा दिए। 5 ओवर्स में ही 55 रन पर पहुंच गए डीएमजे। यस, और जितनी फैन फॉलोइंग होगी इस वक्त डीएमजे में वो माने रखेगी। एक मरतबा फिर ऑफ द बैक फुट, लेकिन अब वो नहीं क्लियर कर पाएंगे फील्ड को। और इन खिलाड़ियों के जहन में क्या कुछ चल रहा हो, क्योंकि जो जुबैर का टैलेंट है, जो उनकी लेगेसी है, वो तो हमने जानी, लेकिन बासित जैसे खिलाड़ी जो कि इस वक्त तवक्को कर रहे होंगे कि जो सीज़न की शुरुआत है, करियर के इब्तदाई दिनों में, वो जो आपको टीम में इब्तदा में सिर्फ एक मोटिवेशन रहती थी सिलेक्ट होने की, वो तो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ अब कई मौके हैं जिसमें वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट की आमद है, ये सीज़न शुरू हुआ चाहेगा, और उससे पहले उन्होंने बड़ी अच्छी इस वक्त तक ये पार्टनरशिप बनाई है। जो पिछले साल की एफर्ट थी उसको कंटिन्यू किया। पावर प्ले का खात्मा, शानदार शुरुआत है डेरा मुराद जमाली की टॉस जीतने के बाद। 56 बिना किसी नुकसान के। ग्रुप अल्फा की बात कर लेते हैं अली। आज पेशावर ने क्वेटा को शिकस्त दी है ग्रुप ए में, जबकि इसके साथ कराची ब्लूज की टीम ने लाड़काना को शिकस्त से 2-4 किया है। तो एक तरफ हार्ट ब्रेक था कराची के फैंस के लिए नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, लेकिन अगर क्रिस क्रॉस करते हैं हम दीगर वेन्यूज की जानिब तो वहां पे कराची ब्लूज को फतह मिली है। पावर प्ले का खात्मा हो चुका है, फील्ड को अब स्प्रेड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर अब अपने जहन में टारगेट्स रख सकते हैं ऐसे शुरुआत के बाद, जहां पर इनके पास फायर पावर मौजूद हो। बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हासिल हुई है, और अब ये जो ऑन साइड पर गैप्स बने उसके जरिए से तेज भागने के भी
एफर्ट का सवाल होगा। पैड पर लगी है, अपील भी की है, बैट्समैन को बीट तो किया, लेकिन सिर्फ जोशीली अपील थी, क्लियरली लेग स्टंप को मिस करती। ये बेहतर लाइन और लेंथ है मूसा की जानिब से, स्टंप्स को टारगेट करेंगे तो बचत हो सकेगी। बॉल अंदर की तरफ आया, लेग स्टंप मिस जरूर कर जाता, लेकिन इनको कोशिश यही करनी चाहिए कि विद इन द स्टंप्स करें, थोड़ा दूर करें, थोड़ा वेरिएशन दिखाएं। मूसा ऑलरेडी ऑल्सो सिर्फ अपनी पेस पे रिलाय करते हैं, ज़्यादा वेरिएशन है नहीं इनकी आर्मरी में। देखिए पेस अच्छी है, तेज़ बॉल करते हैं, पिछला बॉल बहुत तेज़ करते हैं, और पिछले ओवर में जुबैर ने अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया था। देखना होगा कि क्या बेहतर कर सकते हैं मूसा इस ओवर में। फिर विट दिए, लेकिन अब चूंकि फील्ड वाइड स्प्रेड है, इस वजह से इसको अबूर करने का मौके हासिल नहीं कर सकेंगे। मुख्तलिफ रीजन से टीम्स आकर अपने टैलेंट को प्रूव करी हैं। बलोचिस्तान का हिस्सा है डेरा मुराद जमाली, और यहाँ पर बैठ कर शायद ये बहुत आसान होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाड़ियों की इस परफॉर्मेंस को देख सकें, लेकिन जिस अंदाज से जिन मुश्किलात से आते हैं, क्रेडिट जाएगा। इन्होंने अपने आप को तैयार रखा इस मौके पर, और आज इस बड़े मैच में उन्होंने जिस अंदाज की शुरुआत हासिल की है, बासित अली ने अपने टैलेंट का भरपूर सबूत दिया, और दूसरी जानिब जुबैर ने भी अपनी शॉट सिलेक्शन, जहां विट मिली शॉट गेंद हुई, और उसके साथ साथ ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदें, उस पर भरपूर फायदा उठाया, और ऑफ द बैक फुट ये शानदार छक्का सम अप करता है इस पावर प्ले को। तो वो जो मुश्किलात सारी इनके साथ हैं, वो शायद वो अकब में रह जाती हैं, लेकिन जब यहाँ पर आके आपको प्रूव करने का मौका मिलता है, तो सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का इस वक्त कॉम्पिटिशन होता है अपनी हरीफ टीम के खिलाफ। लेकिन ये मोटिवेट करता है उन खिलाड़ियों को जो कि इनके रीजन्स में मौजूद होंगे, और आपको खासतौर पर जो इतवार का दिन था, इसमें अभी भी बड़ी तादाद में वो क्रिकेटर्स हैं जो कि कुछ प्रोफेशनल की खातिर और कुछ सिर्फ क्लब क्रिकेट में अपने आप को तैयार रखते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं। शौक बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ टारगेट चाहिए होते हैं जिसके मरहून मेहनत आप अपने आप को ग्रो करवा सकें, अपने आप को फिट रखें। और चूंकि उन्हीं रीजन से आए हैं, इन्हीं के कोई पड़ोसी होंगे, इनके दोस्त यार होंगे जो यहाँ पे खेल रहे हैं, नेबरहुड में रहते होंगे, इस वजह से आई एम श्योर कि बड़ी मोटिवेशन मिलेगी उन तमाम रीजन्स को, जो कि एक मरतबा फिर रिवाइव होकर इस लेवल तक वापस पहुँचेंगे। वो कि खलीज रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले दिनों में बेहतरी आ सकती है। बड़ी वाइड कर दी मूसा ने, कभी बहुत ज्यादा कमिट ऑफ स्टंप के बाहर, और अब एक्स्ट्रा का तोहफा दिया। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश है मूसा की जानिब से, लेकिन अभी तक वो जो सही एरिया है, सही चैनल है, उस पर बॉल कर नहीं पाए, और ये इनके करियर का ही एक खासा रहा है, क्योंकि पेस अच्छी है, एक्शन बहुत है, रहना भी बहुत शानदार है, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है एक ही जगह पे बार बार अच्छी बॉलिंग करने की, वो मिसिंग रही है। टेस्ट डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में मूसा ने, तब बहुत तेज थे, अभी भी तेज है, लेकिन वो जो एक्यूरेसी का पॉइंट है वो मिसिंग है। ये अचानक से जो पौध आई थी फास्ट बॉलर्स की, जिसमें इलियास भी थे, मूसा भी हैं, इसके साथ साथ नसीम शाह, कुछ ग्रो कर गए, कुछ आपको उस लेवल पे अपने आप को फिट रखने में कामयाब नहीं हो सके हैं। ये अभी भी आपको इस बात को याद करवाने की कोशिश करता है कि एक बड़ी ख़ास किस्म की चीज़ है फास्ट बॉलिंग का शोबा, जिसमें अपने आप को फिट रखने के साथ साथ शायद जो कोचिंग का काम है वो भी बड़ा अहम रहता है कि आप किस अंदाज से अपनी बॉडी को तैयार रख सकते हैं इस लेवल की क्रिकेट के लिए, क्योंकि इतने लंबे रनअप के साथ आप गेंद करने के लिए आएंगे, जंप करेंगे, लैंड करेंगे, तो हर चीज़ पे आपको अपने आप को फिट रखने के लिए काम करना पड़ेगा। अली कहते हैं बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं जब आप क्रिकेट खेलने के लिए उतरे, तो कई कई मुखालफिन आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं, और चाय की टेबल पे बैठ के भी आप बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। इनके दरमियान जो आपको मैच देखने के लिए आए तो कोई ज़्यादा मसाइल लग भी नहीं रहे, लेकिन इसके साथ साथ इस सर्दी के मौसम में आज तो आपने भी जैकेट पहन लिया कराची में आके, तो अब आप क्लियरली कह सकते हैं कि आमद हो चुकी है, और इस मौसम में बड़ा अच्छा मौका है आप टपाल चाय से लुत्फानंदोज। वाइड किया, लेकिन इसके अलावा अच्छा ओवर किया, तो अपने पेस से बीट करने की कोशिश कर रहे हैं बैटर्स को। लेकिन एक और वाइड कर दी,
पेस को चेंज करके बैट्समैन को चकमा देना चाहते थे। विकेट लेनी पड़ेगी बाय हुक और क्रोक। दूसरी तरफ से स्पिनर्स हैं जो कि शायद वहां से भी तब्दीली हो इस पावर प्ले के खात्मे के बाद। अभी तक मूसा के लिए एंगल काम नहीं कर रहा है। इससे पहले जो लास्ट ओवर किया था आउटसाइड जी ऑफ स्टंप बॉल कर रहे थे, अब एंगल इन कर रहे हैं लेकिन उसमें भी कंट्रोल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बॉल टांग की तरफ जा रहा है, तो शायद थोड़ा वेरिएशन, थोड़ी अपने पेस को कम करना होगा। अब दोबारा से एंगल चेंज किया है, देखना होगा कि क्या बेहतरी आ सकती है इस एंगल से मूसा के लिए। ओवर द विकेट आए और अपने एक मरतबा फिर पेस के साथ बीट किया, लेकिन गेंद नीचे भी रही है। बगैर बाउंड्री कवर को गुजारा, 7 के बाद 63 बिना किसी नुकसान। अच्छा लगा है, भले थोड़े नंबर्स में आए हैं लेकिन क्राउड आया है। कल भी हमने देखा कि काफी लोग आए थे। ये थोड़े डिसअपॉइंट होंगे कि हारिस रऊफ को जाना पड़ गया, लेकिन उनकी भी वजह बिल्कुल सही थी। हम दुआ गो कि उनके वालिद बिल्कुल सेहतियाब हो जाएं, जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा है इस्लामाबाद। अदरवाइज वो यहाँ होते तो शायद ये क्राउड जो है वो डबल हो जाता। लेकिन जितने भी हैं ये काफी लाउड हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टपाल टी पी रहे हैं और अच्छा समा है यहाँ पे नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना में। तो यहाँ पे आना बजाते खुद एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि पहली मरतबा इस मैजेस्टिक सेटिंग को देखेंगे आके। तारीखी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम है कराची में, जहाँ पर सन 2000 तक पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं आ रहा था अनलेस के पाकिस्तान ने मोइन खान की क़यादत में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और लाइट्स उस वक्त नस्ब थी, लेकिन उस वक्त ये एग्रीमेंट नहीं था दोनों टीम्स के दरमियान के लाइट्स को ऑन किया जाएगा। और बाकायदा सनसेट के होने के बाद पाकिस्तान अपने पहले टेस्ट मैच को ड्रामाई अंदाज से हारा था। उसके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर हर फॉर्मेट के यादगार मैचेस खेले गए और ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट को देखने के दिलदादा तो यहाँ पर वैसे ही जौक दर जौक आते हैं। जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पिछले साल खेली गई थी वर्ल्ड 20 से कबल, हर मैच चौका ब्लॉक था। और आई एम श्योर कि बड़ी तादाद में अभी भी कुछ लोग इस मखमसे का शिकार होंगे कि क्या आसानी है, कितने आप वक्त में एंटर होंगे। तो रोजाना डबल हेडर्स है ऑलमोस्ट, मंगल तक आप बस अपने सहूलत से आ सकते हैं। या और उसके बाद 2 दिन का गैप, सुपर 8 मरहले की शुरुआत होगी। और यस, डबल हेडर्स रोजाना ही होंगे। फाइनल पे डबल हेडर नहीं हो सकता अनलेस कि आप तीसरी पोजीशन का मैच खेलें, जो कि क्रिकेट में रवाज नहीं रखता। ऑफ द बैक फुट, लेकिन एक मरतबा फिर जमूद तारी है और शायद अब फ्रस्ट्रेट होंगे बड़ी शॉट के लिए। जरूरत से ज्यादा शेल में चले गए, मौके हैं। और जो T20 क्रिकेट के शान शान, जितनी शॉर्ट गेंद मिली थी और जिस टैलेंट के अहल हैं, इसको खेल सकते थे ओवर द टॉप। स्पिन को इंट्रोड्यूस करवाया है शान शेख, 2 विकेट हासिल किए थे पिछले मैच में। लेकिन ये वो पैसेज है जहां पे इनको थोड़ा शायद ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट मिल गया है। अगर यहाँ पे बड़े रन के लिए जाएंगे, अपने विकेट्स गवाएंगे, तो हमने पिछले मैच में देखा है 1 विकेट नहीं 2-3 इकट्ठी गिरी हैं विकेट्स, जिसकी वजह से टीम्स ने स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पे थोड़ा बेहतर प्लान करना होगा, जो इनको सोचा हुआ 170 वहां तक पहुंचने के लिए। लो ट्रैजेक्टरी के साथ गेंद की है। इससे पहले भी हालांकि लेंथ शॉट थी, लेकिन ना उसने राइज किया बैट्समैन के लिए आइडियल लेंथ में। और उसके साथ साथ मूसा को भी शायद दूसरे एंड से रिप्लेस करने की जरूरत पड़े इस्लामाबाद के कप्तान को, जहां पर उनके पास रिसोर्सेज आज लिमिटेड हैं अचानक से हारिस रऊफ के जाने के बाद। जोरदार अपील है, लेकिन अब कर दिया अंपायर को मुतासिर और यू बासित की ऑल इंपॉर्टेंट विकेट हासिल कर लिया नौजवान शायान ने। शानदार बॉलिंग है, पेस में वेरी किया है, स्मार्ट बॉलिंग है ये, शानदार बॉलिंग, अच्छे लाइन पे गिरा हुआ ये बॉल। और यही वेरिएशन का मैं जिक्र कर रहा था कि जितनी जल्दी आप ये जान लेंगे कि इस पिच पे वेरिएशन पेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शान ने इस बात को समझा, बहुत जल्दी समझा, अपने पहले ही ओवर में ब्रेक थ्रू दिलवाया अपनी टीम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे इस पे तो कोई मसला हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखिए, छोड़ा बॉल को हवा में, थोड़ा स्लो किया,
थोड़ा गलत खेलने भी गए, क्रॉस खेलने चले गए, सामने विकेट से खाया, विकेट हासिल की। शानदार बॉलिंग शान की जानिब से। Nasir Khan is the new batter. Good timely breakthrough for Islamabad. It's in the air as well. It's in the gap. Very good ball, Arslan. Very good bowling. Won't Shabash. go over the fence. Back up, back up. नहीं है. Arslan Sheikh coming back to the big stage after quite a while. Very good bowling. Very good bowling. Very, Shabash. very good off spinner. His brother Shayan got the wicket in the previous over. Very good bowling, Arslan. Zubair has looked good. So did Basit Ali. A decent start for Dera Murad Jamali. That's the wicket. Shayan bringing the ball back in. That is a terrific arm delivery. Rather easy call for Walid Yaqub. Very good bowling, Arslan. Both the brothers bowling in tandem right now. Arsal bowling from the Quillian end. Shayan was bowling from the University Road end. चल चल भैया मूसा आजा आजा भैया आपके पास से जा रहे हैं यार Big wicket of Basit Ali will surely have its impact on the final score that DMJ put up. Looks like a good pitch. True bounce, coming onto the bat nicely. We've seen that yesterday as well in the evening game when the lights are on. It gets a little cooler. The wicket gets compact instead of disintegrating. Very good over, very good over. So high scoring thriller. Curtailed by rain, all right, but the run scoring was at 10 runs and over in that second game yesterday. Tidy start for Arsal. 5 runs, 9 gone, 70 for 1. Six bowlers have been tried with 9 overs that have been bowled. Very good, Musa. 160 is what Nasir Khan was saying. I'll be happy with batting first. They can get more than that. 10 overs to go after this. I think they should get more than that. 160 won't be enough from what we've seen out here. Thing is though, we've seen some erratic batting. I mean, we can just criticize them for that, but it has made for some intriguing battle, because other than that erratic batting, we won't see such close contests. Oh yes, boys, very good bowling. Shano. Shayan has shown good variations. The last delivery was a quicker delivery, quicker through the air.
But he seems to have that deception off the wicket as well. Nicely done. And good stop. Aja! Just slaps it back into play. The timing was good on that shot. Tall, lanky Hassan Nawaz patrolling the square leg boundary. Did really well. Use his reach to good effect. There he goes. Good anticipation. He judged the bounce nicely. And put the ball back in play. That is a good effort. He also had to keep in mind the other fielder was approaching as well. Good cricket, Islamabad. Good placement again. Can they do two? Oh, they should have actually, but decide against it. Good over this. Just 3 runs conceded and just 1 more ball to go. Got to finish well. Captain on strike. Yeah, that's a good over. Keeper likes it. I like it. 4 runs coming of it. 10 gone, 74 for 1. Chalo, 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 boys. Aja, 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 aja. Musa, कर ले. Alex. Musa. Shayan and Arslan has really put the brakes on the scoring after the fall of wicket as well. Courtesy Shayan, and then Arslan followed it up with a good over. Now it's been 3 overs where the proceedings have been pretty quiet. Yes, yes. Easy, 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 yaar. Chance at the non-striker? No, just... Well done, Alex. Arslan is quite tall. With so few off-spinners on the circuit, you really want to keep an eye on him. Shabash, He did gilli play for wala Pakistan movement under nahi dekha. 19. Picked up a hat-trick as well, if I remember correctly. Oh, yaar, bhago. Very It good was in bowling, Arslan, 2016. But since then, looks like he's grown taller, a bit stronger. Good variations as well, change of pace, using his height to good effect. Chal. Very good, Arslan, shabash. Is it the right approach from these two? Zubair is set. Nasir Well done, lads. been in just for 7 deliveries. That over number 7 to 14 is very crucial in T20 games. Shabash, 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 shabash. 7 to 15 rather, because that's the phase where we've seen a lot of innings get derailed because of constant loss of wickets. This is the stage where you want to set a platform to be able to launch in the last 5 overs. Chal, bhag, bhag. They're happy to do singles at this stage. Is probably you're talking about not wanting to lose more wickets and then launch themselves in the last 5. But I still believe 79 for 1, 11th over, one of them can actually take the opportunity, especially Zubair, who's been out for a while. 30 balls, 40 runs. He could actually take a chance or two. Calculated risks. Yeah, there are many ways to approach a 20-over innings. Catch. Not a solid blow, won't carry too long off even. Couple of bounces, just a single, another tidy over. Other than the wide, 7 off it, 11 gone, 81 for 1. You're talking about how to approach a T20 innings. There are different teams, they've come up with different plans and ideas. Someone like Australia or England for that matter, they'll go hard from start to finish, regardless of how many wickets they lose. Good decent crowd in here on a Sunday evening. They're making plenty of noise as well.
Good to see a few people in the stands, and we hope to see more and more as the tournament progresses. Catch! Take it! Hit hard back at the bowler, a little wide of him. Well done, boys. Very good, very good. Friend Farmana. Good to see Sunday evening crowd coming in to watch some cricket out here, national T20. Oh, lovely bowling, bang! The big match was in the afternoon, Karachi Whites versus Lahore Blues, which Lahore won very smartly. Didn't allow Karachi to chase down the total of 160. Chal, chal, chal. Easy, easy, easy. Well done, Ash. Well done, Alex. Yeah, that was an absolute thriller. And as I said, both teams were guilty of making too many errors when they were batting, but it did make for an intriguing contest. That's what can happen. We have so many teams. Sometimes all the quality is not that good, but then teams are evenly matched. That makes for close games, and we've had one every day. Today is the third day. Aja! Quick through the air from Farman. Good running there from Zubair, who was at the non-striker end. Yesterday we saw that thriller between Fatah and Sialkot, and the day before that Rawalpindi and Abbottabad. Easily in, good running, good communication. Just singles is what the order of the day is. 4 runs, 7 runs, and now this over 5 runs. That's a job well done by the spinners from Islamabad. 86 for 1. चल बस मुंह में नहीं करना स्पिनर्स ने बांध के रखा हुआ है और गो के विकेट सिर्फ एक गिरी है, लेकिन इसके बावजूद जो कि पहले विकेट के गिरने तक इनका प्रोजेक्टेड स्कोर बन सकता था अराउंड 170 का, अब शायद उस ट्रैक पर ना चढ़ पाए। गेंद विद द एंगल जा रही थी, बहुत ज्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे दोनों बैटर्स अहमद, और शायद इस पिच पे ये ठीक स्ट्रेटेजी ना होगी। ज्यादा दबाव में आ गए हैं या फिर विकेट को बचा के रखना चाह रहे हैं। 8 ओवर बाकी हैं, अगर इस तरह चलते रहे तो 140 तक भी मुश्किल हो जाएगी। कदमों का इस्तेमाल किया और फील्ड को अबूर करने में कामयाब ना हो सके, सिर्फ 1 रन के लिए। जुबैर 44 रन पे पहुंच चुके हैं। T20 क्रिकेट में 100 कर चुके हैं ये क्वेटा की तरफ से खेलते हुए लाड़काना के खिलाफ 2014 में। पकड़ 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 बॉलर के सर के ऊपर से चली गई, एक मौका जरूर निकाला था लेकिन जाती चली गई इनकी आंखों के सामने से। स्वीप करने की कोशिश, वाइड का इशारा एम्पायर का। शाबाश 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 अजान शाबाश शाबाश सर एक बार की जाती है। एक मैच में फतह हासिल कर चुके हैं हैदराबाद के खिलाफ, और अब उसके बाद इनके हौसले बुलंद होने चाहिए। एक मुश्किल ग्रुप से इनका ताल्लुक है जहां पर कराची वाइट्स है, लाहौर ब्लूज है। एक बूमिंग शॉट के लिए गए लेकिन एक मरतबा फिर बल्ले का निचला किनारा, सिर्फ 1 रन के लिए। एक और अच्छा ओवर गो के वाइट फेंकी इसमें, लेकिन 5 रन दिए 91 पे। अकील कराची वाइट्स के खिलाफ 182 रन इन्होंने किए थे, वो मैच ये हार जरूर गए। टपाल टी मोमेंट्स, मौसम कुछ सर्द होता जा रहा है और
ऐसे मौसम में चाय का मज़ा, टपाल चाय का मज़ा तो दोबारा ही हो जाता है। मुझे लगता है दोनों बैटर्स को भी एक एक कप पी लेनी चाहिए इस वक्त अपने आप को जगाने के लिए, क्योंकि टाइमिंग में कुछ मुश्किलात लग रही हैं। 182 जो आप बता रहे हैं कराची की बॉलिंग के खिलाफ माने रखती थी, क्योंकि उनके बॉलर्स भी शायद अपने प्राइम को गुजार चुके हैं, लेकिन आपको रोज रोज ऐसे टीम्स के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिलता। मतलब फिर पैड पर लगी है, लेकिन विद दी एंगल जा रही थी गेंद बैट्समैन को छोड़ते हुए, और माइंड नहीं करेंगे इन एक एक रन को देने में। इस्लामाबाद की टीम के लिए फतह बड़े माने रखेगी। ये हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी को खेल के पाकिस्तान कप में पहुंचे, लेकिन T20 क्रिकेट में आपको तमाम टीम्स को एक दूसरे के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। तेज गेंद की थी लो ट्रेजेक्ट्री के साथ। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी और दूसरा कप भी जीतने में कामयाब रहे, जो कि सेकंड 11 टीम्स के माबैन हुआ। हनीफ मोहम्मद कप, हौसले बुलंद होने चाहिए। अब तक अच्छे अंदाज से स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, फ्लाइट दी, लेकिन बहुत हो चुका, कुफर टूटा। खुदा खुदा करके नासिर को हाथ खोलने का मौका मिला है। 53 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री हासिल की है तेरा मुराद जमाली ने। इंतजार किया, स्लॉट में गेंद हासिल हुई और लॉन्च किया। हाफ वॉली मिल गई उनको ये, और अच्छा शॉट। इनफैक्ट लेकिन ऐसे कई शॉट चाहिए होंगे एक मरतबा फिर अपने आप को डगर पे डालने के लिए। अभी भी वक्त बाकी है इस इनिंग्स में, लेकिन मोमेंटम लूज किया हुआ था। ऐसे ही शॉट ऐसी पिच पे आपको कामयाबी दे पाएंगे, जहां पर इन्फोर्स करने के लिए जाएंगे बैट पर उस अंदाज से आसानी से नहीं आएगी जो तवक्को करें। ये वाला करता रहना। पावर प्ले के बाद पहली बाउंड्री हासिल की थी। तो इसी ग्राउंड पे आप बता रहे थे जुबैर ने 100 बनाए थे, गो के हम पहले भी इससे बात कर रहे थे कि वो यादें अच्छी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो कि आपको इस अंदाज की क्रिकेट के लिए तैयार रखती है, वो शायद उनको ना मिल पाई हो, लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट जाएगा कि फिट हैं। अब जोरदार अपील है, स्टंप्स के बिल्कुल सामने मौजूद है, और अंपायर की उंगली भी फिजा में बुलंद हुई। सेट बैट्समैन को आउट करने में कामयाब रहे हैं। फरमान की पहली विकेट, बैट्समैन को इस पार्टनरशिप को जो कि सेटल हो चुकी थी फाइनली आउट करने में कामयाब रहे। यहाँ तेज थोड़ा ये बॉल किया था इन्होंने, वाइड ऑफ द क्रीज, और स्किट किया, लेट हो गए इस बॉल पे और काफी सामने। देखिए नो बॉल चेक जरूर की जाती है, और यहाँ पे तो सब ठीक लग रहा है। और ये आप बॉल देखें, वाइड ऑफ द क्रीज, थोड़ी सी तेज और प्लम इन फ्रंट। थोड़ा सा लेट हुए, बैट लेट आया, और इमरान जावेद अंपायर को कोई हेजिटेशन नहीं हुई आउट देने में। जुबैर खान 46 रन करके 40 बॉलों पर आउट। क्राउड लुत्फानंदोज होता हुआ, और गानों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, और अपना खुद इंतजाम करके आए हैं वो म्यूजिक का। बहुत ही खुशाइन बात, और तफरी के मौके आवाम के लिए, लोगों के लिए कराची के। ये शायद उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर आकर इंटीरियर सिंध से डांस पेश किया था PSL के गाने पे, उसके करीब करीब इस टूर्नामेंट का फैन ऑफ दी टूर्नामेंट को अभी तक करार दिया जा सकता है। बड़ी एफर्ट किया और अपने लिए माहौल क्रिएट किया। फाद हुसैन को भी ऐसा करना पड़ेगा, उनकी अच्छा टूर्नामेंट अब तक जा रहा है। 45 रन की इनिंग्स इन्होंने खेल रखी है। दूसरी जाने फरमान ने एंगल क्रिएट किया, सीधे खेले वापस बॉल के जाने, कामयाब ओवर था फरमान का 99 पे 2। अखिल, डेरा मुराद जमाली टीम्स और भी ऐसी कुछ टीम्स हैं जो दोबारा से मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आई हैं, उनके लिए अच्छा एक्सपोजर है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। कुछ साल लगेंगे मेरा ख्याल से, 1 या 2 साल आपको देने पड़ेंगे इनको, कि ये वापस अपने उस पूरे सिस्टम को दोबारा से खड़ा करके और थोड़ा सा वापस क्रिकेट में आइए। देखिए आउट जुबैर का, तेज बॉल था, थोड़ा लेट हो गए, प्लम इन फ्रंट।
दोनों तरफ से ये स्पिनर्स हैं और ऑलमोस्ट एक ही तरह की गेंदों के साथ उन्होंने बिल्कुल लो ट्रेजेक्टरी के साथ स्ट्रीट स्मार्ट बॉलिंग की है, बांध के रखा हुआ है। और ऐसे में जब आप के ऊपर बॉलर हावी होता है तो उसकी लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। एक है, वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। फाइनली गिरते संभलते संभलते 100 रन मुकम्मल हुए डेरा मुराद जमाली के ऐसी शुरुआत के बाद, जो कि उनको 65 रन की मिल गई थी। इनको शायद 3 ओवर पहले 100 रन तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी बी है, प्लेटफॉर्म है लॉन्च करने के लिए। आखिरी ओवर में 8 विकेट्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ से शायद स्पिनर्स को वो खैर बात कहना चाहेंगे, उनके ओवर्स खत्म होने के बाद शायद लॉन्च करेंगे कुछ अटैक। चल चल, ये ले अरसल। अंपायर्स का भी अब तक बहुत शानदार कारकर्दगी रही है, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। आजा आजा, काफी मुश्किल काम है अंपायरिंग, और उन्हीं के साथ साथ ग्राउंड्समैन जो लोग हमें नजर नहीं आते लेकिन बड़े अहम होते हैं इस क्रिकेट को मुमकिन बनाने के लिए। बहुत अच्छी अब तक सबने कारकर्दगी दिखाई है। इंतजार किया गेंद का और लंबा चेस था, लेकिन रोक लेना चाहिए था। गेंद हाथों के ऊपर से निकल गई, डाइव को भी टाइम ना कर सके। कीमती चौका हासिल किया, फहद के पहले 4 रन। सबसे अहम बात, अच्छी प्लेसमेंट उन्होंने की। फरमान थे फील्डर जो कि बॉल तक ना पहुंच सके, और बड़ा मौका मिला, लेकिन दूसरी तरफ कॉमिकल अंदाज से रन आउट हो गए। एक तरफ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल करने के बाद शायद फील्डर को तकते ही रह गए थे। एक के बाद दूसरा मौका मिला और अब भारी दिल के साथ जाना पड़ेगा। नासिर आउट हुए हैं। गेंद हवा में मुअल्लक थी, आसान तरीन कैच था, गोके उस पर काबू न पा सके, लेकिन दूसरी ड्राइव मिली अरसल को और उनको खजालत मिटाने का भी मौका मिला इस थ्रो को करने के बाद बैट्समैन को आउट करके। काफी कॉमिकल सिचुएशन थी ये। देखिए शॉट, बहुत ही आसान कैच था, शॉट थर्ड मैन पे जो कि ड्रॉप हुआ। काफी यकीन था दोनों बैट्समैनों को ये कैच पकड़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका और उसके नतीजे में रन आउट हो गए नॉन स्ट्राइकर एंड के बैट्समैन। जैसे सोते हुए पाए गए नासिर, करे कोई भरे कोई की मिसाल बने नासिर, जो कि सिर्फ इस बात पे शायद बैट्समैन से अफसोस करने के लिए जा रहे थे कि वो कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन वो तो कैच ड्रॉप की लाइफ को एंजॉय कर पाए, लेकिन उनको वापस आना पड़ा। और शायद इन्हीं की गलती थी कि लेजीनेस का मुजाहरा किया, शेयर कंफ्यूजन थी। और गो के कैच ड्रॉप था और वो खुद मजाक खेज अंदाज से था, लेकिन उसको रिकवर करने का मौका मिला। ये क्या फर्क क्रिएट करेगा, डेरा मुराद जमाली के हौसलों को पस्त जरूर करेगा। मोहम्मद दीन आने वाले बैट्समैन है, और जो स्पिनर्स के जाने के बाद अब फास्ट बॉलर्स के खिलाफ वो अटैक को लॉन्च कर सकते थे, उस अपॉर्चुनिटी को भी यूज किया, क्योंकि ऐसे हुआ ये अहमर के 2 नए बैट्समैन अब क्रीज पर आ गए हैं। नए हैं अभी भी फहद, जिन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया है। दीन ने इनको ज्वाइन किया है, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होंगे और नए सिरे से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा। एक चीज जो इनके हक में थी कुछ ओवर पहले तक, वो ये था कि इनकी विकेटें नहीं गिरी हुई थी, एक ही विकेट गिरी हुई थी, और अब नुकसान ये हो गया है कि वो मोमेंटम टूट गया है जो एक सेट बैट्समैन अपनी टीम को देता है। तो दोबारा से इनको रीबिल्ड करना पड़ेगा और वक्त नहीं बचा है। दोबारा देखेंगे और इंटरेस्टिंग होगा, खासतौर पर इस्लामाबाद के लिए, डेरा मुराद जमाली के लिए हार्ट ब्रेक, लेकिन इसके साथ साथ हम सब के लिए सीखने को हो कि कभी भी जब तक गेम फिनिश ना हो या बॉल डेड ना हो, आप अपने आप को क्लियर कंसिडर ना करें। जॉनी बैस्टो के साथ कुछ हो चुका है एशियस में, वो सब हमने देखा था और ये उसकी एक मुख्तलिफ तौर की मिसाल थी, लेकिन यहाँ पर भी गो के ये लाइफ मिली थी। दूसरी जाने फहद को यहाँ से नासिर ये समझ बैठे थे कि वो क्लियरली कैच आउट हो जाएंगे और करोड़ों मील दूर थे, उन्हीं को वापस पलटना था। फहद कहाँ अपनी विकेट गवाते ऐसे मौके पे कि जब उनकी ना गलती थी, उनको एक चांस मिल चुका था। उठाकर खेलने के लिए गए, गेंद हवा में अपने बाएं जानिब जा रहे हैं फील्डर, और एक और कैच मुकम्मल कर लिया।
हमाद सिद्दीक ने बेहतरीन अंदाज से जज किया, रनिंग कैच था, आखिर में आसान बनाया, लेकिन कहीं से भी इतना सहल नहीं था। जबरदस्त कैच लिया और सिर्फ 2 गेंदें खेलने के मेहमान साबित हुए दीन। बहुत ही अच्छा कैच। भाग के कैच पकड़ना आसान नहीं होता, आपका बैलेंस आउट होता है, नजर आपकी बॉल से हटना बड़ा आसान होता है, लेकिन उन्होंने बॉल अपनी नजर जो है वो बॉल के ऊपर रखी और बहुत अच्छा कैच पकड़ा। दस गेंदों में अब तक 3 विकेटें गिर चुकी हैं। मोमेंटम टूट चुका है इस वक्त तेरा मुराद जमाली का। मोहम्मदीन बगैर कोई रन बनाए आउट। 10 गेंदों में 3 विकेट्स गिर गई हैं और जिस तरह से ये इन्होंने इब्तिदा में उड़ान हासिल की थी, मुकम्मल तौर पर अब ये गड़बड़ाहट का शिकार। उसामा खलील आने वाले बैटर और एक मरतबा फिर नए सिरे से इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए जाएंगे। गो के दीन का आइडिया ठीक था, इस वक्त बड़े शॉट्स की ज़रूरत थी, लेकिन बगैर फुटवर्क के अपने से दूर रहकर खेले और स्लाइटली अपने बाएं जाने भागते हुए रॉन्ग फुटेड भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद गेंद पर नजरें जमाए रखी, ना अपने बैलेंस को गवाया और ना ही उन्होंने अपनी हथेली में आने के बाद कोई और गलती की और यूं तीसरी विकेट पिछली 10 गेंदों के स्पेस में हासिल कर गए। पहली विकेट मिली है उमैर को, स्लो वन की थी, पेस नहीं था उतना जिस पे उठा के खेल पाए। 99 और फिर 106 पे 2 विकेट्स गिरी हैं, सिर्फ 7 रन के स्पेस में अपने 3 खिलाड़ियों को गंवाया। डेरा मुराद जमाली के ना तजुर्बेकार खिलाड़ी बहुत से ऐसे भी होंगे जो लाइट्स में शायद पहली बार खेल रहे हैं आज, तो ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। ये एक्सपीरियंसेस इनके काम आएंगे आगे जाके। एक्स्ट्रा का बोनस मिलेगा, लेकिन शायद बहुत ज्यादा फर्क इस ओवर में ना पड़ सके। डेरा मुराद जमाली की टीम जो कि एक मैच में फतेहयाब हो चुकी है, 182 इन्होंने बनाए थे कराची वाइट्स के खिलाफ। हुसैन खोसा इनके हेड कोच, जबकि बैटिंग और बॉलिंग के लिए स्पेशलिस्ट हैं अमानुल्लाह कमरुद्दीन इनकी फील्डिंग के कोच। एक बार दफा फिर उठा के खेलना चाहते थे, लॉन्च किया अपने आप को भगाते हुए गेंद को रोकने के लिए। बेहतरीन ओवर, अब तक विकेट हासिल करने के बाद से एक स्प्रिंग आ गया है स्टेप में उमैर के। यकीनी तौर से इस्लामाबाद का अपर हैंड इस वक्त ना तजुर्बेकार यंग टीम के खिलाफ। वंस अगेन बहुत बाहर है गेंद ऑफ स्टंप के। आप ग्राउंड स्टाफ का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल क्रेडिट जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ ये कि डे इन डे आउट मैचेस हैं बल्कि डबल हेडर्स हैं जिसके लिए तैयार करना माने रखता है। गेंद एक मरतबा फिर नीचे ज़रूर रही है, ये एक दिन पहले पिच नंबर 6 जो कि इस्तेमाल की गई थी। इब्तिदा में इसमें आज बाउंस बेहतर लग रहा था बारिश के बाद, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नीचे होती जा रही है और इस बाइस पे उतना आसान नहीं रहा जितना इनिंग्स की इब्तिदा में था। और जब पिछले मैच के फातेह कप्तान थे वो भी ये बात कर रहे थे कि जितना नई गेंद के साथ आप स्ट्रोक प्ले रिलाई कर सकते हैं, उस पर जो इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है उस पर आप बिल्डअप करते हो, अपने आखिरी ओवर्स में भी रन बनाते हैं। अब अपने आपको नए सिरे से एडजस्ट करना पड़ेगा इस टारगेट के बाद। 65 रन की ओपनिंग स्टैंड, लेकिन उसके बाद से डीरेल हुई है डेरा मुराद जमाली। मैक्सिमम को मिस करती, पैड पे जरूर लगी, बैट्समैन को बीट किया, लेकिन कामयाब ओवर अपने अख्तिताम तो पहुंचा। 2 वाइड की, लेकिन माने ना रखिए क्योंकि विकेट हासिल की। एक 110 पे 4। ये थोड़ी सी अंदर आई बॉल, लेकिन
पैड पे लगी ये बॉल, अपील कर रहे थे एलबीडब्ल्यू की, लेकिन क्लियरली नेक्स्ट स्टंप से नीचे जाती हुई। $110 for 4. Another full one, very full. Musa was absolutely certain Walid Yaqub was having none of that. Musa generally bowls from pretty wide of the crease. For him to pitch the ball in line would be a challenge unless it was straightening. You can see 2.5 stumps. Good call, Walid Yaqub. Just a leg by though to the total. Yeah, very good evening, Ali Yunus. Very good evening. Good to see Musa pitching it up. We know what he's capable of. He bangs in short most of the time. But probably learning this art of bowling up to the batter and trying to reverse swing. He's a good exponent of reverse swing. Knocks him over. Change your pace. And Musa comes up trumps here in Islamabad on a roll here after that first wicket partnership. They've really rattled Dera Murad Jamali. You miss, I hit. This is what happens when you bowl wicket to wicket within the stumps. And now Dera Murad Jamali losing their wickets in almost every over that we're seeing in the last 3 overs. There's no problem there from Musa Khan. The best part was he bowled it within the stumps. He wanted to go big, change in pace, slower one. Wanted to go big, couldn't connect and lost his wicket. 99 from 1 to 111 for 5 now. Dera Murad Jamali. Usama gone for 1. Shahid is the new batter. Time running out for Dera Murad Jamali to put up a decent total. They'd be very disappointed with the way their innings has progressed in the last 20 minutes or so. Not much experience as we can expect. The best of 7 would not send any shivers down Musa's spine. This is big shout. The finger has gone up straight within the stumps, and umpire Walid Yaqub in action again. Musa is on a hat trick. Again, stumps to stumps. This is good bowling. Beating the batters by pace. Touch of reverse swing also going Musa's way. 2 wickets in 2 deliveries. Shahid will have to go back if there is no problem here. Musa is quick at his best. He's way above 140. But he's not very tall and he's skiddy as well. Look at that. Ball skids through. The new batter too late on that. And there you go. Islamabad's dominance continue here as Shahid walks back without troubling the scorer. Nelson's on the board for 6. We haven't had a hat-trick this year in the National T20 Championships. I'll double check with Farhan, not that I'm aware of. There's a good chance Musa is on a hat-trick. He's been bowling wicket to wicket.
Probably doesn't need to do any fancy. Just go for another straight one, full if possible. Hat-trick delivery. Musa, oh, couldn't get any closer than that. Fuller with a little bit of shape. That inside edge. The throw really fired from fine leg. Musa is not happy. From almost having a hat-trick, from getting hit on the throw from the deep. That is comedy of errors. Yeah, almost there. Almost got the hat-trick. Just inside edge. The idea was right. Ball within the stumps. Keep watching. Look at that. After that, no, not this one, but he was disappointed until this happened. Uh-oh. Just surprised him, rather shocked him. Funny expressions by Musa. What great pictures. What great pictures were those. Angling across the left-hander, Rohel Nazir. Unlike Ala Rizwan, went up for that appeal. That was way away from the bat. But 2 wickets in the over for Musa. First delivery was the slow delivery. The batter was too early on the shot, and the batter was too late on the second one. Faisal, this was a great opportunity for Dera Murad Jamali after the start they got. And they just could not capitalize on it. I thought at that moment, in the first 6 over, they really did give them hard time. But again, as we have seen throughout the day, overthrow given, sloppy. Since that we've seen since the day, the teams have lost wickets in the middle order. 17 gone. We'll talk more about it. 113 for 6. They'll be disappointed. And rightly so. They had the opportunity. They were beaten by pace. And they're so disappointed they're not taking off their pads even. I don't know if they won't have a second innings in T20. So from 99 from 1, 111 for 6, they lost 5 wickets in 12 runs. Give himself some room, and that will run away to the boundary. A much needed boundary. Fahad, who's been there for 9 deliveries, I thought he really is thinking that he may just get run out of partners, so just go for it. Good connection, earns him a boundary. Yep, using the pace of Umair. It was a very average delivery outside the off-stump. He gave himself room. He was very early into the position and played it over that point area. Quick hands. He's showing all his 3 stumps to the bowler. This time was a slow delivery. Won't go to the boundary. A couple runs with some intent. I think that throw hit the batter, but they're well within their right to go for that 3rd run. 120 early with this wicket. What could be a good total from here? 7 runs off the over already. First 6 over, they scored 56 runs without losing a wicket. I thought they had a great chance of beating Islamabad at that point. That has stayed low. The finger's gone up. That's good reward for bowling wicket to wicket on a pitch which is keeping stay lower and slower as the day has progressed. And that is a very good bowling from Umair. 2nd wicket for him as Islamabad is on a roll. Similar to what Musa did. Bowled quick,
Ball within the stumps and got the wicket. There shouldn't be a problem here. No problem whatsoever. Some good fast bowling we're witnessing, Faisal. Earlier it was Musa and now he's getting the wicket. Mayor Afridi bowled really well. 6 wickets down for 21 runs as Shoaib walks back. He's gone for 120 for 7, Dera Murad Jamali. These bowlers, they're showing that they don't need any fielders. Bowling wicket to wicket. And there's 3 dismissals now. Very quick succession where 2 leg befores and 1 bowled. And I don't think Umair is going to do any different to Rauf. Full and straight with a little bit of tail. Very surprising, these fielders, they're coming off the boundary line. I think these tail-enders, they can move forward a few yards, especially that deep mid-wicket area. They could have stopped these 2 runs. Because now they're coming from the boundary lines. They just give them the opportunity to come back for the second, which they did. 9 runs of this over. It will go over the top, only just. Just the 1 run. Sarma Bhatti was chasing that delivery, but it was just out of his reach. 4 leg befores and 1 bowled out of 7. The bowlers have all done it by themselves. Yeah, 1 run out to add on that. And 1 catch. That is the reward you get when you bowl stumps to stumps. That has gone way up. Has it got far enough? Not quite. Another catch. Ali Imran takes the catch in the deep. And the slide for Dera Murad Jamali continues and is gathering pace now. 8 wicket gone. It's pretty ordinary by DMJ. They had the chance to score big, but they just keep on losing their wickets. They just don't want to stay there till the end. They're in a hurry and they're losing their wickets. Once again, change of pace. That is good bowling and an easy take for Ali Imran. He had plenty of time to judge that one. Fahad goes for 14. Dera Murad Jamali 123 for 8. Zahoor Ahmed. Not much experience at this level. Really hard task for the lower order batters of Dera Murad Jamali on a big stage. That is a smashing blow, but Ali Imran will come and get to it. 18 gone. It's 18.1. Ali Yunus. Yeah. It does happen at times. I was thinking Musa wasn't even bowling. Musa has still got 2 wickets. But you're having a funny day, Ali Yunus. Earlier on, between the 2 games, well, I'll come back to it after this delivery. Sliding down.
Now tell me what happened between the two games. It's wide. Called by the umpire. Yeah, I got hit on my hand. It's a terrible blow. It's just not played cricket for a long while. Oh, that's a good one. Who's he? That's my fellow commentator on my right, Shah Faisal, doing the fielding drills. That's between the two games. That was a good catch, Shah Faisal. I must say, the reflexes are still there. Well done. I don't think we've seen all of it. Just hang on. You don't need to say all of it. That's enough. That was good. Thank you, Rob. That was enough. I was just out of breath after taking only a few catches. So out of shape. But the real one is coming up just now. Oh, what's happening there? And you just quit? No way, you cannot do that, Ali. It was tough. It was very tough. Still got bruise on my hand. Look at that. Not my cup of tea. It's too difficult. That's all right, that's all right. There was plenty of dew, right? You can make any excuses. We'll take it. Knocked him over. Look at the stump fly. This time it's Musa. A spectacular dismissal. And another one bites the dust for Dera Murad Jamali. This time it's Zahoor. Yeah, this is what pace can do. It can beat your defense. And he's doing it with some ease, Musa. No problem whatsoever there. Have a look at that line and the length. This is the third dismissal. Same position. Beautiful bowling. Well, if you don't have good slip fielders, the bowlers will have to do it themselves. 125 for 9. What a spell. What a comeback spell, rather. The last 2 overs, I think Musa has been brilliant. He's been quick, he's been disciplined, and he's been getting the wickets. 2 LBWs, in fact 1 LBW and 2 bowled by Musa. That shows the consistency. Musa on a roll. Can he finish it off now? He went for that Yorker, little bit of tail. Oh, there was slight confusion. Another run added to the total. The crowd has really made good noise tonight. First game was an absolute thriller. This one, Islamabad made a stunning comeback. This is Musa's wickets. Straight, change of pace. Once again, change of pace. This time it was a quicker delivery. Then again, hitting the back of the length, low bounce, skiddy. And that is Musa at his very best. He doesn't have a high arm. He's very skiddy. At good pace. Probably didn't look as fast as we've seen him in the past. But his accuracy was there, and he still has the ability to reverse the ball. This is an improved Musa Khan. He struggled the last season. I remember he struggled to bowl up to the batter. But in this spell, he's been just brilliant. He's reversing. If nothing happens. And guess what? He's very good with the bat too this season. He's got 100 in Grade 2 cricket this season. Brilliant. What a season. Well, he couldn't get his 4th wicket. The feat that he has achieved once in T20 cricket, but nonetheless, it was a terrific spell of bowling from Musa Khan. 3 for 22 of his 4. 19 gone, 127 for 9. What a spell. 3 for 22. Economy rate 5.50. Doing lots of damage to TMG. 11 dot deliveries, Faisal. He deserves a Tapalti. Why not? He's done the hard work.
Definitely he's waiting to get off here. And his Tapal tea moment. Even my fellow commentator Ali Yunus, he can't hold on to a catch, but he can hold on to a cup of Tapal tea. Anytime. Good on you, Ali. Chance, a soft dismissal that really sums up the innings of Dera Murad Jamali. That dismissal, they kind of were clueless towards the middle part of that innings. And after a solid foundation, they've really come unstuck against some very, very good and skillful bowling from Islamabad. Absolutely. Other than Basit Ali and Zubair Khan, who scored 28 and 46 respectively, nobody has impressed us. Nasir scoring 16. There shouldn't be a problem there. Yep, that's all clear. You can carry on walking, everyone in the ground, because this is the end of the inning. Like the slower one in pace, wanted to guide it towards onside, top edge, easy, simple catch for the bowler himself. And Faisal from 91 for 1 in 13 overs to 36 for 9. Sad story. Well, plenty to learn for these youngsters from Dera Murad Jamali. But this moment belongs to Islamabad and their coach Junaid Khan, Kasser Abbas, really pleased with the efforts of their boys. Wickets for Musa, Meher Afridi, Shayan and Arsal in the middle were very impressive as well. All in all, an excellent effort there by Islamabad, and they set this game up very nicely for themselves. 127 is all that Dera Murad Jamali could muster. And now it's time to have an interview, and Akil Samar is down there with man of the moment, Musa Khan. वेरी वेल बॉल्ड मूसा, आपने शानदार बॉलिंग किया ऑन द हैट्रिक भी हुए. जो इब्तिदा में पार्टनरशिप लगे थे उसके बाद कमबैक करने के लिए पेस का बड़ा इस्तेमाल किया, साथ बॉलिंग स्पिन भी अच्छी हुई. तो कैसे देख रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्म किया. और पिच में शुरू में जब बॉल किया तो स्किट कर रहा था, तो जब फर्स्ट चेंज में आया तो पता चला कि बॉल ग्रिप हो रहा है, तो फिर मैंने ज़्यादा ब्रेक मतलब स्लो रन करने की कोशिश की, तो इसलिए उससे मुझे काफ़ी मदद मिली. अभी जो टोटल मिला 128 रन का टारगेट, आपके लिए यही टारगेट था जब इब्तिदा में बॉलिंग करने के लिए उतरे थे, या सोच रहे हैं कि उसको आसानी से चेस कर सकते? जी बिल्कुल, जैसे कि जूनी भाई हमारे हेड कोच हैं, उन्होंने हमें यही प्लान दिया ताकि हम जितने कम से कम टारगेट में उनको रजिस्ट करें ताकि हमारे बैट्समैनों के लिए आसानी हो. इंडिविजुअली आप ऑन हैट्रिक भी हुए थे, तो आपके लिए जो जहन में इमोशंस चल रहे होंगे वो बड़े ज़बरदस्त होंगे. एक मरतबा फिर आपको इस स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला सीज़न की शुरुआत. जब हैट्रिक पे मैं था तो बॉल थोड़ा रिवर्स हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं हैट्रिक कर लूँगा बहुत ईजीली ना, तो वो बॉल मेरा अंदर भी आया, मगर एंड टाइम पे बिल्कुल बल्ले का किनारा लगा और बच गया वो. वेरी वेल बॉल्ड एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू. Thank you very much, Akil Samar. Well, the first wicket partnership was quite handy until this happened. Basit Ali went. And a little bit of an effort for the second wicket, but since then it was a slide. From 99 for 2, there was a complete capitulation, a drop catch, but then run out at the non-striker end. Complete comedy of errors. Then Umair and Musa joined in on the fun. Catching was good from Islamabad. And we will see plenty of disturbing of the furniture. This one was straight, hitting the pads. And again, Umair and Musa complementing each other very nicely. In between, good changes of pace, good
reading of the conditions as well by the Islamabad bowlers, like Musa just said in his interview. Change of pace worked really nicely for both these bowlers. Umair was handy, and that catch closed the proceedings for Dera Murad Jamali. And Islamabad will only need 128 when the run chase begin in just about 5 minutes. और अंपायर की उंगली भी फिजा में बुलंद हुई। नासिर को हाथ खोलने का मौका मिला है। Knocks him over. Fine. This is big shout. The finger has gone up.
Nawaz bat because he's been so good. I don't know how good he is now because it's been a while since we've seen him, but he's surely got the talent. Heard he was injured with. Yeah, not just Hassan, but Ali Imran, the partner, he's an explosive batter too. And if they get going, both of these batters, it will be over very soon. 6.4 the runs per over required for them. And as you said, at one point, DMJ were in a very good position from 91 for 1, losing all their wickets on 127. Ali Imran is a good, impressive striker at 137, 750. So you can tell the consistency also there. Really fit cricketer Ali Imran. He hits them really hard. I've seen him hit some big sixes. And as Sikandar was mentioning about this boy, Hassan Nawaz, his strike rate also 123. Early days at this level. I almost thought Ali Imran was good all-rounder. Didn't bowl today. He's concentrating more on his batting, his opening. Mr. Imran Javed says play. Swing and straight over, mid-off for a boundary. Good start. Got the bottom part of the bat, but it was enough to clear the 30-yard circle. Yeah, that's his quality. He hits them straight. Even this was from the bottom of the bat, but still cleared the fielder. Power behind it. It's a great start for Ali Imran and Islamabad. And as I said earlier, if they two stay, this will be over very soon. That was a good ball this time around. Came in a bit. And he's coming back for the second. That's good running. Keep that pressure on the fielders in the deep. Only the two which are in the power play. Squared him up a little bit. I feel it was just angling in and then just shapes away slightly. Early wickets is what DMJ need at the moment to put some pressure. Rohail Aziz, Sarmad Bhatti, good batters. One slip in place. It's a good line, good length also. We were talking about the first inning. DMJ were in a good position when spinners came in. I think Shayan bowled really well. Farman also. And Arshal, 3 spinners. I think that was the time that then they put break on DMJ's runs and make Islamabad make a comeback in this game. Again, lack of timing in the shot. Just a single. Such a huge opportunity for all these players from DMJ. They've already won 1 game against Larkana. But this is a different situation, different opponents, different conditions. The match being broadcasted, watched all over their city. I'm sure everyone will be watching. They'll have a keen eye on these performers. You can see the change in field. They want things to happen and happen quickly. Slip is out, but I believe they're not going to defend the score if they don't get wickets. The fielder has been placed at mid-wicket now. Yes, he was getting that swing. Perfect delivery, leaving that outside edge. What a ball. Forced him to come on that front foot and play at it. Great length. The swing was there, yes, but he had to put it in the right area, which he did. Sealing with the first wicket.
No worries there. Hassan Awaz is poking at it. Great line, great length. He had to play at it. There's nothing he could do about it. Beautiful bowling. Shoaib making no mistake behind the stumps. Great start for DMJ. Hassan Awaz going back without troubling the scorers. It's 7 for 1. The captain, Rohail Nazir, impressive strike rate, 115, just 150. I think it's better than that. The average needs to go up a little. End of the over. 7 for 1 after the first. This is the length which has been troubling the batters throughout this tournament. Great homework done by these bowlers. Just a touch outswing for him. But you have to be in the right area to get that nick, which he did. Expression says it all, that it meant a lot for him and the team. There's such science in that cricket ball. The seam, how you lock your wrist and you make sure that the seam hits the surface. And that's what happened. The ball was swinging anyway, but once it hits the seam hits the surface, slight deviation, it takes that outside edge. And how to present that good seam is also an art. Not everyone can do, and then we saw that the seam was facing the first slip. It's just amazing what you can do with a cricket ball if you know how to use it. And the example was Mohammad Shami, what he did in the World Cup. Siraj, even Bumrah, even with that wrist positioning. I think that is, anybody listening, anybody watching, I think that was the perfect example of what Sikandar was just stilling. 1 wicket for Mohammad Shahid. You make a great point. It's all about the wrist position if you're a seamer. Inside edge, and that'll go to the boundary. Not a confident shot where the batter would raise his bat and stamp his authority, but the runs count. Leg by signaled by the umpire. It's very important that they don't get excited, these DMJ's bowlers, because they've got that 1 wicket. All they have to do is be disciplined in their line and length. This was nowhere near to that. Onto the leg stump, easy pickings. Even the leg by will carry to the boundary. They have to show the discipline because they've got that desired start. They've got that wicket. Well done. Jamalis will have to bowl them out. Because 128 is going to be a little tough to defend with bowling full 20 overs and not getting there. They have a good chance. I know the scores are not much. Score is not much, 116 runs. But the batting, if you look at the batting card of Islamabad, there's just Sarmat Bhatti to come, who's a formidable batter. Other than that, I don't see many experienced batting lineup. Hamad Siddiq, Azan Tariq, they're all bowlers. So if they can get a couple of wickets here inside that power play, they'll have a game on. And the way the ball is seaming around, if they can get in the right areas, who knows? He's moved across. They're asking for a leg before, but not enough. And probably also I heard two sounds. No leg by signaled. His bat and ball, but he did move across. He got a little too excited. Even if there is no bat, it will definitely be missing the leg stump.
hope he's fine there. Just be disciplined. Be within the stumps. Be a Musa Khan. He bowled beautifully. Yeah, that's more like it. It's high in the air. We'll go all the way. He's got that flair in him, Ali Imran. When he hits, it stays hit. He just not forces it, it times it too. Just like that. Again, bottom of the bat, not quite middling it, but still it carried all the way towards mid-wicket boundary. That's the power he has. He's super talented. Again, bad ball, had to be put away. Boundaries are coming in thick and fast here. Big over this, 16 coming out of it, 23 for 1. Wrong line again. That's easy pickings. It's not going to work. It's not going to help their cause. Got to be disciplined. 2 overs, 23 for 1. First ball single, bringing Imran back on strike. Good cricket. Rotation of the strike. First, now the strike is to Ruhail Nazir. It's a good opportunity for him to get going. They're not with their regular captain Haris Rauf, so he has that responsibility, added responsibility. Keeping Ruhail Nazir in check. Salim has looked good. He's the one who's just been getting that ball to talk a bit. He's just not getting the help from the other end. He bowled a beautiful over, got the wicket, and then his partner Mohammad Shahid gave away 12 runs. So he needs support from the other end. Good bowling. Great length, great line. Wickets is what they want. It's very important the captain Ruhail Nazir doesn't absorb too many deliveries on strike, because that will have its impact on Ali. Not you, Imran. Yeah, that's a bit of a slog. Oh, it's gone through. They all count. They've got to be very, very tidy. They're defending 128. Yeah, we've seen this throughout the day. The fielding standards have been on the average side. It's just slogged it. And if when you're defending a low total, you got to be defending every run. Better effort was required. Didn't like it.
Inside edge, 4 more. Unfair on Salim, the bowler. 3 overs gone, 33 for 1. Absolutely unfair. There's nothing he could do about it. He just went after it, just heave, that swing. Inside edge, 4 runs. Rohail Nazir is on 10, 33 for 1. Hassan lost his wicket on the very first delivery. Ali Imran and Rohail now 19 and 10. They're on. Sarmad, the batter left-hander, still to come. Again, a bit of a finger in the follow through. Single again. Good running. Should have stopped it. The bowler himself gave away easy run. Just look at Murad Jamali's batting performance. They were 99 for 2 and 127 all out. Just a span of 28 runs, they've lost 9 wickets. Straight and a boundary. He's looking very good, means business, Ali Imran. Races to 24. Yeah, he's their best batter for a reason. Because he hits it straight, that's his quality. Previous in the first over, he hit it straight again, looking to go over the head of the bowler, and even he's not timing it, even he's not middling it, but still it's going for the boundary. Oh, it's gone over the keeper's chance here. Who's getting? Yes. Short fine takes the catch. Salim is the fielder, and they see the back of Ali Imran. Oh, this is a big wicket. Really big wicket. Because they don't have many batters in their side, Islamabad, and they see DJM so happy. DMJ, they're all happy. Because they got that wicket of Ali Imran, who was looking so good. But one shot too many. Fair delivery. He's got the first wicket and now the catch. Ali Imran will have to go back. 24 runs, 39 for 2. Sarmad, the new batter, in at number 4. The left-handed batter. th match. Not many runs there in 14 games, 106. What I like about that dismissal is the presence of mind from the bowler, Mohammad Shahid. Saw Ali Imran coming down, banged it in hard.
and created that ball to have a sharp rise. Since he was coming down the line, the ball got big on Ali Imran and couldn't control his shot. So that's an instant reaction from the bowler, keeping an eye on the feet of the batter, what he's trying to do. Have a look, coming down, he drops it short. And it gets big on Ali Imran. Wide called. Yeah, great point you make, Sikandar. Spot on. Smart bowling by Shahid. So waited enough for the batter to make a move, and he did. And got the prize off in form of the wicket of Ali Imran. 24 runs of 12 balls he scored. End of 4 overs, 40 for 2. गो के इवन स्टीवन शायद ना लगे, लेकिन इसके बावजूद टारगेट्स आने हैं इस्लामाबाद के और इसकी वजह से वो अपने आप को कंफर्टेबल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी दूसरी विकेट गिरी है। इस वजह से अपने आप को पेस कर सकते हैं इस टारगेट के पीछे। याद रहे डेरा मुराद जमाली ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और 2 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आउट करने में कामयाब रहे हैं। सरमद नए आए क्रीज पे, रोहेल अपने कदम जमाने की कोशिश करेंगे और अच्छी बॉलिंग हो रही है इस दौरान। टॉप कॉन्टेस्ट की उम्मीद कर सकते हैं शाह फैसल एक मरतबा फिर। जी बिल्कुल, और हमने देखा है प्रीवियस मैच में भी जो इरेटिक बैटिंग है उसकी वजह से आप मुकाबले को खत्म नहीं कह सकते। रोहेल नजीर क्रैकिंग कट शॉट, ज्यादा बुरी बॉल नहीं थी लेकिन बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था। बाउंस को राइड किया और जोरदार स्ट्रोक खेला 4 रन के लिए। यस, रोहेल का ऑलरेडी तीसरा चौका है। इंतजार किया गेंद का, हाई बैक लेफ्ट के साथ चढ़े और टॉप ऑफ द बाउंस जाकर एग्जीक्यूट करने के लिए गए हैं। शानदार टच में नजर आ रहे हैं रोहेल और एक आसान टारगेट की जानिब। अगर दूसरी तरफ से विकेट गिरे भी तो ऐसे शॉट मजीद कॉन्फिडेंस देंगे। बड़ा गैप नहीं था लेकिन पावर प्ले में पीछे को रोकने के लिए मौजूद नहीं था। ऑन साइड पे गए और एक और मरतबा आउट होने का खदशा और एक और बड़ी विकेट हासिल कर लिए। सेट बैट्समैन को आउट कर लिया। डेरा मुराद जमाली के हौसले बुलंद, विकेट के साथ सलीम ऑन अ रोल। रोहेल नजीर की इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की है, दूसरी विकेट सलीम की। वही बात कर रहे थे इस बॉल से पहले, इरेटिक बैटिंग की वजह से मैच दिलचस्प होता है क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और बज़ाहिर जब ऐसा लगता है कि एक टीम मुकम्मल कंट्रोल में है, वो ऐसी गलतियां अनफोर्स्ड एरर करती हैं कि दूसरी टीम को मैच में वापस आने का मौका मिल जाता है। और यहां भी 3 विकेटें गंवा दी हैं इस्लामाबाद ने। फ्रंट फुट चेक करना होगा, कोई मसला नहीं है यहां पर। और रोहेल काफी डिसअपॉइंटेड होंगे इस शॉट से। हार्ड लेंथ पे गिरा हुआ गेंद था, उसको जो एरिया उन्होंने चूज किया इस विकेट पे, वो शॉट एक्सिक्यूट करना मुश्किल है और उसका खमियाजा भुगता। रोहेल ये जरूर सोचते होंगे लेकिन अब इसके लिए देर हो चुकी है। इस मैच में आज की रात 15 रन बनाकर आउट हुए। 44 पर 3 इस्लामाबाद। अजहान तारिक आगे हैं, अकील समर, और इन्होंने बॉलिंग ओपन की थी। इसका मतलब है कि ऑलराउंडर्स अब शुरू हो गए हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भी रोहेल का शॉट जो है वो काफी इनडिस्क्रिमिनेट था। आपको पता है कि रिक्वायर्ड रन रेट तो बिल्कुल भी कोई चैलेंज नहीं है, आपको सिर्फ बैट आउट करने हैं, बॉल्स आपको मिल जाती हैं। जबरदस्ती का शॉट मार के आउट हुए। ऑफ द बैक फुट रन हासिल होंगे दूसरे निकले पे वापस।
लेकिन लंबा सफर बन गया अचानक से। 128 रन का टारगेट जो कि बाज़ाहिर नजर आ रहा था कि अपनी रन रेट को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन अगर आप अब तक पहुंचे नहीं हैं ब्रिज पे तो उसको क्रॉस करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ज्यादा बाउंस भी मौजूद नहीं था और खेलने के लिए चले गए ऊंचा फ्रंट ऑफ द विकेट, स्क्वायर ऑफ द विकेट को टारगेट करने के बजाय, और सिर्फ वो फील्ड की जानिब खेल पाए। ना एलिवेशन थी ना डिस्टेंस। अपने आप को कोसेंगे जब जब ये रिप्ले देखेंगे और जब जब स्कोर कार्ड पे उनको इस विकेट को देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब से दोनों तरफ से अब तक उन्होंने एक ही अटैक को बरकरार रखा है और शायद दूसरी तरफ से स्पिनर को भी इंट्रोड्यूस करने का टाइम हो, जो कि नए बैट्समैन को सेट होने का मौका नहीं देगा। बेहतरीन स्क्रिप्ट बन जाएगा दूसरी जानिब डेरा मुराद जमाली के लिए कि जैसे पार्क प्ले अख्तिताम की जानिब जा रहा है, ये अपने स्पिन बॉलर्स को इंट्रोड्यूस कर पाए। तमाम ही मैचों में हमला है तो बॉल विकेट में स्टिक करने लगता है, और स्लोअर बॉलर्स अगर अच्छे स्पिनर्स हैं तो बैट्समैन की जो है जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। कामयाब ओवर मुकम्मल, 46 पे 3। एक मरतबा फिर आपको हम सुबह बखैर, शाम बखैर या दोपहर बखैर कहेंगे, आप जहां भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान में है तो आपका इतवार ख़त्म हो रहा होगा, अगर आप कनाडा अमेरिका में हैं तो आपका वीकेंड शुरू हो रहा होगा, जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ऐप या माइक पे पाकिस्तान भर में जा रही है, पीटीवी स्पोर्ट्स पे, जबकि दुनिया भर में आप कहीं भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पे। 18 टीम्स हैं, 63 मैचेस हैं, नॉन स्टॉप क्रिकेट है जो कि मंगल तक जारी रहेगा। ये पहला मरहला जहां से हर ग्रुप से दो दो टीम्स को आगे जाने का मौका मिलेगा, और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के तमाम मुकाबले जो कि आप तक पहुंच रहे हैं। बेहतरीन सेटिंग है, कराची के शौकीन आकर इन मैचेस से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। नौजवान सरमत को अब सामना करना पड़ेगा स्पिन अटैक का, जो कि बेहतरीन वक्त है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। कप्तान आए गेंद करने के लिए। 6 विकेट्स हासिल कर रखी हैं अब तक 6 मैचेस में। चलो चलो चलो, बहुत आला नासिर, शाबाश शाबाश, एक विकेट चाहिए। अखिल, आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि इस्लामाबाद अपने नेट रन रेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही ट्रिकी है। हमने आफ्टरनून में, अर्ली इवनिंग में देखा कि कराची और लाहौर की टीमें इस ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा ये दो टीमें इस्लामाबाद और डेरा मुराद जमाली। एक ट्रिकी सिचुएशन है। फरहान की मदद से हम जानेंगे कि इस ग्रुप में क्या इक्वेशन बनती नजर आ रही है। सिर्फ 2 ही टीमों ने आगे जाना है। लाहौर ने भी इस ग्रुप में डेरा मुराद जमाली के खिलाफ खेलना है। इस्लामाबाद का मैच हैदराबाद से है कि लाहौर और इस्लामाबाद का मैच भी बाकी है। अगर देखा जाए कराची हैदराबाद का मैच, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद को नेट रन रेट से ज्यादा जीत पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि उनका मैच लाहौर के साथ जो होने वाला है शायद वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो कि इस ग्रुप में से कौन सी टीम जाएगी, या कम से कम वो कराची के बराबर हो जाएंगे। कराची की आज की हार काफी महंगी साबित हो सकती है होम साइड के लिए। वैसे ऐसा फॉर्मेट बन गया, अब किसी भी गेम में ना रिलैक्स कर सकते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं चीजों को। उठाकर खेलने के लिए गए, खतरनाक अंदाज से, और फील्डर इसके नीचे आए। शाहिद ने ऑल इंपॉर्टेंट कैच मुकम्मल कर लिए, ड्रामाई कमबैक किया है। डेरा मुराद जमाली ने कैपिटल को ट्रबल से 2-4 किया है। अजान आउट। और आप डेरा मुराद जमाली की टीम की खुशी देखिए, बिल्कुल उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह उनकी गेम में वापसी हुई। एक मॉडेस्ट टोटल उन्होंने बनाया, लेकिन उसके साथ उनकी फील्डिंग और बॉलिंग ने बहुत अच्छा कमबैक किया। इस्लामाबाद की टीम लड़खड़ाते हुए यहां पर, उनके मेन प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, और इस मरतबा आजान सिर्फ फ्रंट फुट चेक करने की रस्मी कार्रवाई बाकी है, और जाहिर है कि इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत ही क्वेश्चनेबल है। कोच जुनैद खान और कैसर अब्बास जरूर अपने प्लेयर से ये पूछने में हक बजानिब होंगे कि आपकी एप्लीकेशन और डिसिप्लिन कहां गया। आजान की विकेट गई यहां पर, सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाए, 47 पर 4 आउट। आओ 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 उस्ताद।
शाबाश शाबाश भाइयों। अरसल शेख आ गए इस डूबती हुई नाव को संभालने के लिए, और जहां पर तवक्कुआत का दबाव था, टारगेट सामने नजर आता था, अब शायद उतना ही दूर हो गया है जितना इस्लामाबाद से डेरा मुराद जमाली है। 12 मैचेस में उन्होंने 22 रन बनाए हैं। कैसे सफर को तय करेंगे? पार प्ले की आखिरी गेंद है कामयाब बॉलर के लिए। रोक रोक रोक। स्पिरिट्स अप हैं, शानदार पावर प्ले का खात्मा किया, जो कि एक मौके पर भागते हुए नजर आ रहे थे इस टारगेट के साथ। अब डीप ट्रबल में इस्लामाबाद 47 पे 4। ये वो विकेट, आजान की सेलिब्रेशन देखें। अब ऐसा लगता है कि डेरा मुराद जमाली को एक यकीन हुआ है कि इस मैच में उनकी वापसी मुमकिन है। पहली विकेट, दूसरी विकेट, फिर तीसरी और चौथी। आप रिएक्शंस में डिफरेंस देख सकते हैं। ग्रेजुअली उन्हें लगा कि ये मैच अब उनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। इमरान जावेद ने पावर प्ले के खात्मे का इशारा किया। और पावर प्ले में जब कोई टीम 3 या ज्यादा विकेटें गंवा दे तो ट्रेडिशनली उनका T20 मैच जीतना मुश्किल होता है। दोनों बैटर्स नए हैं। सरमद ने 1 रन बनाया, अरसल ने सिर्फ 1 ही गेंद खेली है। सलीम ने 23 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। अपना चौथा ओवर कराने जा रहे हैं। दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं, लंबा सफर है और उसको तय कर लेंगे। पहला रन तेजी के साथ लिया था, सब कुछ ठीक किया। इस प्रेशर को दूसरी जानिब धकेलने के लिए ऐसे कई रन हासिल करने पड़ेंगे पावर प्ले के खात्मे के बाद, जब फील्ड वाइड स्प्रेड हुई है। बैटर पहुंच तो गए, लेकिन अगर ये अच्छी थ्रो होती तो मुश्किल में डाल सकती थी। आप देखिए, बिल्कुल उन्हें आखिरी लम्हे पर बहुत ज्यादा तेजी से भागना पड़ा, लेकिन थ्रो दूर भी थी और बॉलर के हाथ आई भी नहीं। नर्वस एनर्जी ऐसा लगता है इस्लामाबाद के बैटर्स में है। सलीम माल ने बॉलिंग की इब्तिदा की थी उस एंड से, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कोटा मुकम्मल करने के लिए। इंटरेस्टिंग कॉल है कप्तान की जानिब से, ब्रेव भी है। 2 विकेट हासिल करके कामयाब तरीन है। पहली विकेट हासिल हुई थी जब ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग हासिल किया, उठाकर खेलने के लिए जगह थे, चेस किया, गेंद सिर्फ हवा में मुल्लक हुई। ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी रही, कैचिंग भी आसान कैचेस मिले जिसके लिए कोई गलती नहीं की, और जाते जाते चौथे विकेट का भी नुकसान कर गए। कप्तान बॉलिंग करने के लिए आए थे और शानदार कैच लिया, और उसके साथ ही यादगार सेलिब्रेशन डेरा मुराद जमाली की। खूबसूरत डिलीवरी, बच निकले, लेकिन ऑफ द बैक फुट खेलने के लिए गए थे। कमाल का ओवर किया सलीम माल ने, डिजर्व कर रहे हैं जाते जाते एक और विकेट। बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग की है, दोनों जानिब बॉल को स्विंग कराया। इस पैकेज में आपने देखा पहली विकेट उन्होंने हासिल की आउट स्विंगर राइट हैंडर को, और इस मर्तबा छोड़ती हुई चली गई लेफ्ट हैंडर को। जरूर टेक्निक को क्वेश्चन करेंगे अरसल की। तीनों स्टंप्स उन्होंने दिखा दी। 6ठे नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद की बैटिंग की कमजोरी है। सरमद भट्टी थे रादर, कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। यहाँ भी फ्रंट फुट पर खेले, और अगर गौर से देखेंगे तो फिर वो अपनी स्टंप्स पूरी दिखा रहे हैं बॉलर्स को। हेलो, उम्मीद है कि आप आने वाले दिन में हफ्ते की शुरुआत के लिए तैयार होंगी और सब होंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट कंटिन्यू करेगी। रोशनी को शायद कराची में, जहां पर सर्दियां अभी मुकम्मल तौर पर आई नहीं है, लेकिन क्रिकेट की बहार जरूर उतरी हुई है। प्रीवियस बॉल का रिप्ले फ्रंट फुट डिफेंसिव एक मरतबा फिर क्विक सिंगल है, और ये बेहतर है इस वक्त सरमद के लिए। स्ट्रगल कर रहे थे अब तक सलीम माल के खिलाफ। बैकअप आया कर। इनकी जिंदगी का यादगार स्पेल है सलीम माल का, और इसके साथ मीनिंगफुल भी है। यहाँ पर इनका सफर अगर खत्म नहीं करना तो आज की फतह उनके लिए माने रख सकती है। डेरा मुराद जमाली, और ये आपको देखने को नहीं मिलता अक्सर कि आप अपने न्यू बॉल बॉलर से 4 ओवर्स करा लें। जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं सलीम, बोथ राइट हैंडर्स लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, और काफी यहाँ सरमद भट्टी की डिफेंसिव टेक्निक में काफी खला नजर आ रहा है, उस पर बात करेंगे। ये ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल सही तरीका है फ्रंट फुट डिफेंस करने का।
ये अरसल थे। और जो मैं बात कर रहा था, अगर आप देखें जब पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है वहां पर आपको तीनों स्टंप्स नजर आ रही हैं सरमत भट्टी की, जहां बॉल हल्का फुल्का स्विंग हो रहा है। बहुत ही रिस्की टेक्निक है। और अरसल छठे पे खेल रहे हैं, सरमत भट्टी तो चौथे नंबर पे खेलने के लिए आए थे। सात के बाद 50 पर 4। और इसी दौरान अपना यादगार स्पेल मुकम्मल किया है सलीम माल ने। गेंद को स्विंग किया, विकेट्स हासिल किए हैं। शायद एक और विकेट रिजर्व कर रहे थे, लेकिन अगर वो हासिल होती तो इस्लामाबाद के लिए कमबैक बड़ा मुश्किल होता। अभी भी टेल अप है डेरा मुराद जमाली की, और अब दोनों एंड से शायद स्पिनर आएंगे जो कि जाल बुनने की कोशिश करेंगे। अब तक आइडिया से आ रही नजर आ रही है पार्टनरशिप, जहां पर उन्होंने उस अंदाज से कदमों का इस्तेमाल नहीं किया कि जो उनको फ्री फ्लो में रन दे सके। स्ट्रगल कर रहे हैं रन हासिल करने के लिए। सरमत भट्टी भी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं अंडर 19 का। और अकील पिछले ओवर में हमने देखा विकेट्स का पैकेज, मुझे नहीं लगता, या ये मेरा ख्याल है, फरहान से पूछेंगे, डेरा मुराद जमाली के प्लेयर्स ने नाइट क्रिकेट शायद अपनी जिंदगी में बहुत कम खेली होगी, लेकिन 3 हाई कैचेस उन्होंने पकड़े। बहुत क्रेडिट है उन्हें कि प्रेशर एनवायरनमेंट में उन्होंने कैचिंग उनकी अच्छी रही है, और यही वजह है कि इस्लामाबाद अंडर प्रेशर है। ये है इक्वेशन। 77 पर 77 रन रेट का इशू नहीं है इस्लामाबाद को। रोक रोक नासिरा। यस, अगर इन्होंने अंदर लाइट्स खेली भी हो तो वो शायद इस क्वालिटी की या इस लेवल की नहीं होगी जिसमें आपको इतना कुछ करना पड़े। और हुसैन खोसा जो कि इनके कोच हैं, वो उनकी स्पेशलिटी फील्डिंग से ही वाबस्ता है, जो कि नजर आती है आपको अब तक डीएमजे की इस फील्डिंग में। सही है राहुल। फरहान निसार हमारे साथ मौजूद हैं, काफी मालूमात रखते हैं तमाम प्लेयर्स के बारे में, कोचेस के बारे में। उनके बगैर हमारा काम काफी मुश्किल होता, वो काफी आसान कर देते हमारा काम। वो तो शुक्र करें कमेंटेटर्स के बारे में नहीं रखते, या अगर रखते हैं तो बताते नहीं है। ये आपकी सोच है, वो अच्छी खासी मालूमात रखते हैं। ठीक है शाबाश शाबाश। यस, ये राजों से भरपूर खेल है। जितने वेरिएबल्स शाह फैसल क्रिकेट में होते हैं, खाल ही किसी और खेल में शायद हो सके। पिच का रवैया, ग्राउंड डिफरेंट, आउटफील्ड, स्पिन कितना हो रहा है, टर्न कितना मिलेगा, सामने बॉलर कौन है। क्योंकि जो सबसे करीबी गेम लगता है बेसबॉल है, और वहाँ पर गेंद पिच ही नहीं होती। और आप तो बड़े करीब से जानते होंगे उस गेम को, लेकिन यहाँ पर आप पिच से जो वेरिएबल शुरू होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से इनफाइनाइट हैं, जो कि बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी आप जितनी डिटेल में जाए। बड़ा ही इंटेलेक्चुअल पॉइंट आपने रेज किया, और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं इससे। और फॉर्मेट्स भी, किसी भी खेल में इतने फॉर्मेट्स नहीं हैं जितने क्रिकेट में हैं। टेस्ट मैच, T20, फर्स्ट क्लास, 3 डे, 4 डे, यू नेम इट। रोक रोक जुबैर भाई। एक और मिसफील्ड, लेकिन इस मरतबा डेरा मुराद जमाली थे कल्प्रेट, जो कि रन रोकना चाहिए था। क्या प्रेशर लूज करेगा। सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। आप तारीफ कर रहे थे फील्डिंग की अकील भाई। देखिए, इसी के साथ 8 ओवर मुकम्मल, लेकिन गेम ऑन है कराची में। 54 पे 4 इस्लामाबाद। Interestingly poised this game. After 8 overs, Islamabad in a spot of bother, 54 for 4, and 2 new batters at the crease, and Zahoor to start his spell. Not a lot of runs to chase down, but losing wickets
along the way, and regularly doing so isn't helping the cause of Islamabad batters. Four men in the circle, two stopping one. Mid-off coming from the circle. Arslan gets another one. In a chase like this, wherever the 2 overs go right for the batting side, things can become pretty easy. But at the moment, they are under pressure. They have lost their top 4 and not a lot of batting to come. So these two have to put up a good show, a good partnership, and make sure that their team gets home. And this one has been clipped off his legs. Will be 2 runs. And they're confident, and the umpire. And meanwhile, all that is happening, we welcome Sikandar Bakht. Thank you, sir. More problems, is it, for Islamabad? Seem to be falling apart for no reason. Some shot selection, some hastiness. Let's find out the decision pending. What's the result? Throws good. On the bounce. Touch and go, touch and go. This looks trouble. Looks trouble, yes it is. Another one goes. Has to take both bounces. Yes, that will be further bad news for Islamabad. Another one bites the dust, goes back in the hut. It's 55 for 5 now, and Islamabad making mess of this easy chase, which should have been an easy one, but credit goes to the DMJ team. The way they are gelled in, the way they are looking to play aggressive cricket, aggressive in the field, good intent, good body language. And Sarmad Bhatti only got 7 and off 13. 56 for 5, Islamabad. That's wicket number 5, Sarmad Bhatti run out. Hamad Siddiq is the new batter in, very new to the circuit, second game. If the Jamalis win, they'll get 2 wins now. They will strengthen their position for the Super 8. Along with Karachi Whites around, sorry, Karachi Blues, is it? Karachi White, sorry, and some other big teams. And why not, Sikandar? They're putting up a good show, and this is the platform where the teams can come up and show their skills and can move forward. They've done well, haven't scored a lot, but their unit seems a good one in the field. Islamabad only have themselves to blame. Earlier on, we saw Hassan Nawaz, who was one of the main destructive batters to play for Islamabad. He got a great delivery first up. And then the next batters, they played a few bad shots which were not required. An extra man in the ring now. Another dot ball creating further pressure on Islamabad DMJ. 56 for 5 at the end of 9. So the wickets to fall so far.
And this one was a 4-stroke, and the bowler had the presence of mind to pitch it short. And then again, a nothing shot. This one caught at mid-on, and the wickets just kept falling. Once again, a stroke without any purpose. Straight to the fielder, an easy take. And then this run out. This is definitely a sin at this point of time. Good throw, good collection, and quick time. शाबाश 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 जुबैर भाई You just showed us the fall of wickets. I was looking at Raheel Nazir's dismissal. He's the captain, and when you have 2-3 wickets fallen around you, that kind of shot. It was very surprising for me when I saw his stats. He's playing his 63rd game, and he doesn't have a single 50. And remember, we were talking at the start of this game about his numbers. शाबाश 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 Because if you're not aware of the situation, as a captain, if you do not know what to do at this time when your team really needs you, when you are the most experienced player, चल चल रहा ऊपर बॉलर बॉलर yes, not a single 50 in the 63 outings in the T20 games that he has played. Another risky run. Last boundary since 30 balls. So it's 5 overs since the last boundary. All the credit goes to the Dera Murad Jamali team. Young side, not very experienced. First time on this platform, on television. Everyone watching, and they are displaying some very good things, very encouraging things. Captain is bowling into his 3rd over. 1 for 8. चलो 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 Spliting it, going wide of the crease, coming round the wicket. It's a match for DMJ to lose. And I think DMJ, credit has to be given to their captain. See their fields, the point and the cover and mid-wicket. They're all there to save one. They're cutting the angle, coming close to the batters, putting more pressure on them. चलो चलो शायद And that's good to see. We haven't seen many sides put that pressure in the ring on the batters. So this is basically good game awareness. They are sensing a kill. They have picked up 5 wickets, and now they want to cut the angles, ask the batters to take more risks. शाबाश से डंडों से बाहर नहीं करना है Yeah, lots of traffic movement by the captain, who is bowling at the moment. He's got one more fielder inside the circle on the offside, so he's plugging extra cover, and he's got a very शाबाश नासिरा well wideish long off also. चलो 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 जुबैर भाई Yeah, still can't stop that single with the 4 in the circle on the offside. शाबाश शाबाश The good thing is that he bowled to his field. The batter had to play the ball in the gap on the offside, and if he wants to take a risk, he has to go across the line. Now once again, the fielders have changed. I think the quicker one has come in that short cover position where they want to block the batters from taking one run. चलो चलो Yeah, I wonder why they don't do that in first place. The hot spots would belong to the quicker ones. शाबाश शाबाश नासिरा 62 for 5, halfway through. I must say that there are some good fielders in the Dera Murad Jamali team,
and with good arms, because we've seen some rocket throws come at the keeper and also very accurate. So this aspect of fielding where we see many teams lack a lot of things, this is good coming from a team which does not have a lot of exposure. Is there more problem? Is there more problems for Islamabad? We'll have to wait. The umpire, yes, he's going upstairs. So it's the first time that we have said something good about some team and they've displayed it. Otherwise, it was going, let me see the time. So it's 10:35 and maybe things start to change. And it is 27th November. Doesn't look very confident. The body language suggests that he knows he's in trouble. Let's see. Direct hits are always trouble for the batter. He's so far away. Only his bat now. Yeah, he's out. I think he is. Oh, it's getting closer. Where are the bails? Where are the bails? Wow, he's made it. Amazing. The angle just doesn't tell us how far is the ball from the stumps. He's made it. Well done. Outstretched, head down, bat into the crease, sliding it in. Yeah, he's good. He's good. Yeah, now this angle, again, it doesn't show. One thing is missing. Once it was the batter, now it's the ball. How far is it coming from? But whatever the case, lost one to the run out not long ago. Safe. 64 for 5. It remains that way. They're bowling to their fields. We have hardly seen them not bowl where the maximum fielders are. And that's a very good thing. That is good discipline from the bowling side. And also the captain. Because if the bowlers bowl on a disciplined line and length, according to their fields, then it's much easier to captain such a bowling lineup. Yeah, easy to. Wake up. शाबाश और यहाँ नहीं करना है. This was the loud shout for the run out. For a moment, thought he's gone, but he made it. Just a couple of inches, that was the difference. Was the captain himself with the throw, Nasir Khan. Oh wow, another run out. What a brilliant throw. A rocket throw coming from the deep point fielder. And once again, as we mentioned, the fielding looks something special in this DMJ side. And this one was quite a throw. Flat and accurate. And Basit Ali it is, the PJL sensation. The highest scorer of that league. And what a time to get this run out. Putting more pressure on Islamabad. So he has got Arslan run out. Arslan, the all-rounder, the off-spinner and batter. This one was cut hard, so he made good ground to his left and then recovered quickly. The best thing was how quickly he just stood up and was in a position to throw this. Yeah, key rule, collect and release as quick as possible. When you field, when you dive, you should be in the loading position very quickly. Arslan Sheikh goes for 6. It's 67 for 6.
Musa Khan, the new batter in at number 8. I remember Musa being able to get his side out of trouble in the PSL a couple of times. He's somebody who can bat and hit big. But this time around, it's more than 50 runs required and a side which is bowling and fielding really well. And that's the run out. The problem was here. Are you coming? Are you not? That's very wrong. You actually give the intention to your partner that you're in for the second run and then you abort. He had given up. Yeah, just backing out on that commitment for that second run. Kabaddi tight wicket le aao. टाइट आओ विकेट तो का दफा नकने बस बाकी खाए रे शाबाश शाबाश सही है बासित. So Fahad, to start his spell, another left arm spinner. And this one, he was trying to cut it, but he will get the desired result. It will be 4 runs, not the desired area though. But after 40 balls, finally Islamabad have a boundary. They still need 57 or 53 balls. See, the equation looks easy, but the wickets, they've already lost 6 of them and are under pressure. Oh, wow. How good was that? He's found that gap, the 2 men on the cut. Well, DMJ need to be careful. Don't end up leaking too many runs. You've got 6 wickets. Yes, and both these deliveries were quicker balls. And that is something they need to avoid. They need to ask the batters to do their bit, not ball short and quick. On the other hand, well placed this time by the batter, playing a cut stroke in the gap, well controlled all along the ground. शाबाश शाबाश. चलो 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 एमडी. Another opportunity for 2, but oh, he's gone through. There are Murad Jamali is letting this slip. 3 boundaries and 3 deliveries. Did you also say something good about their fielding? Okay. No. But how many times you see such things happening when you feel as a fielding side, you've got it in control. And you take your eyes off the remaining runs that you need to defend. You're focusing on the wickets that you need to get. Not only you need those 4 wickets, you need to stop that run flow. You don't have a big score that you're defending. Just 49 required of 50 balls. You remember that World Cup match, Australia and Afghanistan. Trying to focus on getting that 1 wicket, forgot about the runs. And they scored 200. That was one of the greatest ODI innings of the cricket history. And a great example for the hand-eye coordination stuff. Another single to Islamabad. 12 overs gone, 80 for 6. That was the first boundary of the very first ball of the over. Would say a touch lucky. This was well done. The gap. And then the 4th one would have been a couple, but a misfield resulted in another boundary. मोमेंटम वापस आया है. डेरा मुराद जमाली विक्ट्री और फतह को करीब देखकर
शायद थोड़े बहुत उनके अपने औसान खता हो गए हैं। ऐसा हुआ करता है जब आपको इतने बड़े लेवल पे खेलने की आदत ना हो और जीतने की भी ना हो, तो जितना आप जीत के करीब जाते हैं उतना नर्वस हो जाते हैं। खुश आमदीद अहमद सईद। बहुत बहुत शुक्रिया, दुरुस्त फरमाया आपने। और तमाम तर क्रेडिट डेरा मुराद जमाली की बॉलिंग को और उनकी फील्डिंग को। कुछ लैप्सेस ज़रूर हमें नज़र आए, लेकिन अब तक जो है वो सब कुछ हार नहीं बैठे हैं इस मैच में। काफ़ी चांसेस अभी मौजूद हैं। चांस एक मरतबा फिर, लेकिन फील्डर ने थ्रो नहीं की। रनिंग बिटवीन द विकेट तो बहुत ही तबाहकुन रही है इस्लामाबाद की। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी इन्होंने। 2 खिलाड़ी रन आउट हुए और रनिंग बिटवीन द विकेट में कोई तालमेल बिल्कुल भी नहीं। यहां पे बैकअप मौजूद था लेकिन थ्रो से गुरेज किया फील्डर ने। शायद वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन था, वो कर नहीं गए। जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन हुई है डेरा मुराद जमाली के खेल में भी पिछले 10-15 मिनट में। एक और मिसफील्ड। मूसा भी हाफ वे खड़े थे, एक और चांस बन सकता था। काफी एरेटिक क्रिकेट देखने में आ रही है दोनों टीमों की तरफ से। अमर, जैसा आपने कहा कि 2 रनआउट्स हुए हैं और कम से कम 3 लोगों ने नाकाम कोशिश भी की है रन आउट होने की, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों टीमों की जानिब से लैप्सेस। इस वक्त मुकाबला ये चल रहा है कि कौन आज के दिन हमें जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली, जबरदस्त मौसम में। और ऐसा मौसम हो कराची का, बारिश कम होती है, लेकिन उसके बाद टपाल टी मोमेंट आ जाए तो क्या ही बात है। बड़ी जल्दी में चाय पी रहे हैं ये, क्योंकि वो मैच भी मिस नहीं करना चाह रहे। मैच पर से भी आप नजरें नहीं हटा सकते, हर बॉल पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्वालिटी पे जरूर इस मैच की बहस हो सकती है, एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है। लेकिन और ये समटाइम्स ऐसा होता है जब इतनी ज्यादा टीमें खेल रही हैं तो टैलेंट आपका स्प्रेड आउट हो गया है। तो यहाँ पे जरूर कुछ वीक लिंक्स ऐसे टीम में है। और अभी जब डेरा मुराद जमाली का जिस तरह का स्पेल फील्ड में चल रहा है, तो आप उमूमी तौर पे ये कहते हैं कि शायद एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जाके बात करनी चाहिए अपने बाकी यंगस्टर से, लेकिन उनकी टीम में तो तमाम ही कम तजर्बे वाले खिलाड़ी हैं। हवा में बॉल, लेकिन गैप में चला गया और 4 रन के लिए चला गया। मूसा इस सीजन में अच्छी बैटिंग फॉर्म में हैं और इस्लामाबाद को उनकी बैटिंग की बहुत शदीद जरूरत है इस वक्त। 13 के बाद 87 पर 6। जहां ये मारना चाहते थे वहां नहीं गई बॉल, थोड़ा आउटसाइड एज सा था, लेकिन गैप में गया और खुशकिस्मती उनकी 4 रन हासिल किए। थोड़ा उन्होंने कलाई का रुख जरूर मोड़ा, शायद इतना फाइन वो नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन नतीजा तो उनके मतलब का ही निकला। थोड़ा सा मोमेंटम आया इस्लामाबाद की इस इनिंग्स में। एक विकेट चाहिए यहाँ पर। पिछले 2 ओवर्स में 20 रन आए हैं इस पार्टनरशिप में ही। और अगर आप नेक टू नेक इक्वेशन देखें तो रन्स में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन विकेटें बहुत ज्यादा गिरी। लेकिन 99 ऑनवर्ड्स डेरा मुराद जमाली की भी विकेटों की झड़ी लगी थी। अच्छा, इस्लामाबाद का हैरान कुन बात यह है कि ये दोनों जो अभी टूर्नामेंट्स खेलती हुई आ रही है उसमें विनर्स हैं। अचानक इस तरह का खेल पेश करना अजीब सी बात है, लेकिन आई एम श्योर कि इट्स जस्ट अ बैड डे। और दोनों टीमों की हमने कंपैरिजन की बात की, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया कि डेरा मुराद जमाली के पास कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो नर्वस हो रहे हैं फतह के करीब जाकर। लेकिन इस्लामाबाद क्योंकि जीतते हुए आ रहे हैं, उनकी एक हैबिट बनी हुई है, तो शायद वो इतनी आसानी से हारे नहीं। यहाँ फिर चांस है, करीबी मामला हो सकता है।
शायद कीपर ने थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया। इमरान जावेद तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे और ये विकेट अगर गिरती है जो कि मूसा की होगी तो यहां से फिर इस्लामाबाद की वापसी और मुश्किल हो जाएगी। जितना कि पहली बार में नजर आ रहा है, ये नहीं पहुंच सके हैं बैट्समैन क्रीज पे अपनी जगह वक्त पे, और बहुत ही बड़ा नुकसान होगा ये, और अब मुश्किलात शुरू हो जाएंगी इस्लामाबाद के लिए। यहाँ पे एक मरतबा फिर अच्छी फील्डिंग, पिछले 2 ओवर्स में मिस्टेक्स की हैं फील्ड में डेरा मुराद जमाली ने, लेकिन यहाँ पे पिकअप और थ्रो अच्छा था। देखते हैं कि कीपर ने विकेटों के करीब बॉल लगाया लेकिन ज्यादा वक्त ले लिया और मूसा पहुंच गए। अच्छी टेक्निक मूसा की, अच्छे से उन्होंने स्ट्रेच किया और बल्ले को ड्रैग किया। ये एंगल मिड विकेट का एंगल है, लेकिन यहां से भी मौका मिलेगा देखने का। अच्छा बैट को ड्रैग किया, किसी भी यंगस्टर के लिए अच्छी टेक्निक है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए। इस एंगल से लग रहा है कि शायद ड्रैग नहीं किया बल्कि इन द एयर था और अंदर तो पहुंच गए हैं। क्या बल्ला लगा चुके थे? टच एंड गो अमर सईद। बड़ा मुश्किल फैसला, बहुत ही क्लोज है। देखना होगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलता है यहाँ के नहीं। राशिद रियाज टीवी अंपायर, बहुत ही मुस्तनद, बहुत ही बेहतरीन अंपायर्स में उनका शुमार होता है पाकिस्तान के। राशिद रियाज का फैसला नॉट आउट। मूसा बाल बचे। शाबाश शाबाश यार। मुश्किल, बड़ा अच्छा फैसला, लेकिन राशिद रियाज का टच एंड गो था। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द बैट्समैन। पकड़ ये वेल्डन फादी। टेक्नोलॉजी में डाउट कम ही होता है, लेकिन ये बहुत ही करीबी मामला था। ये फादी। मूसा पहुंच गए थे लेकिन बल्ला उन्होंने ओवर द लाइन ड्रैग नहीं किया बल्कि प्लांट किया, और यही वो चीज थी जो उनके लिए खतरे का बायस हो सकती थी। 14 के बाद 88 पर 6। रोहेल नजीर 63 मैचों में 633 रन, 150 कर चुके हैं। 56 रन इनका बेहतरीन स्कोर है। स्ट्राइक रेट 115 का। थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी थी कुछ देर पहले, ये जिक्र हुआ था कि शायद रोहेल नजीर ने कोई हाफ सेंचुरी नहीं की इस फॉर्मेट में, लेकिन एक हाफ सेंचुरी थी जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। 56 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। ख्वाहिश उनकी होती कि आज वो 56 बनाते तो उनकी टीम इतनी मुश्किल में ना होती। चलो ये नासिरा जबरदस्त, शाबाश। हमाद और मूसा की पार्टनरशिप इस्लामाबाद को थोड़ी सी उम्मीद दिलाते हुए, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट अभी भी खतरे से खाली नहीं है। जबरदस्त स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड। एक टिप्पा लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर पहली मर्तबा एक एतमाद से भरपूर शॉट। 2 ओवर्स क्वाइट गए, लेकिन यहां पर हम्माद ने अटैक वापस किया नासिर के ऊपर। मच नीडेड बाउंड्री। बिल्कुल तीर की तरह सीधा था ये शॉट, और यही इसकी खास बात थी। वहां कभी भी इस पोजीशन पे फील्डर मौजूद नहीं होता। सेफ शॉट 4 रन के लिए। फिर कंफ्यूजन, फिर चांस है, लेकिन फील्डर डीप थे। 30 गज के दायरे के एज पे खड़े थे, इसलिए बैटर्स को वापस आने का मौका मिल गया। ये भी ना तजर्बेकारी है कि जब इतना प्रेशर बैटर डाल नहीं रहे, बल्कि बैटर्स पर प्रेशर है, तो 30 यार्ड के फील्डर जो दायरे के बिल्कुल एज पर खड़े हैं। और ये देखिए कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। जब एक टीम आपके नेशनल 2 टूर्नामेंट्स
कुछ जीतती हुई आ रही हो तो आप ये तवक्को रखते हैं कि उनमें हम आहंगी होगी खासी, जो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही इनकी रनिंग में आज खास तौर पे। चलो 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 शायद 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 फिर कंफ्यूजन, मूसा बॉल को देखते हुए और पार्टनर उनसे तकरीबन हैंडशेकिंग डिस्टेंस पे आ गए थे। फिर मिस फील्डिंग ने इस्लामाबाद को वो मौका दिया जिसमें इस मुश्किल से वो बच निकले। खुशकिस्मती रही कि ये मिस फील्ड हो गई, वरना कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था इनके बचने का। रनिंग बिटवीन द विकेट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्रिकेट में। 15 ओवर के बाद 94 पे 6। अहमद सईद से बात करेंगे कि यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए। ये रिप्ले देखें तो ये तो बिल्कुल ना करें जो इन्होंने किया। बॉल वॉचिंग, कोई कॉलिंग नहीं और मिस फील्ड की वजह से बचत हो गई। आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक खास ड्रिल्स इसकी कराई जाती हैं अब ट्रेनिंग के दौरान। बहुत से प्लेयर्स मैंने देखे हैं, अच्छे प्लेयर्स, तजुर्बेकार प्लेयर्स, जो शॉट मार के गलत हाथ में उनके बैट होता है, जब वो लैंड करते हैं अपने 1 रन के लिए क्रीज में बैट, तो उनका मुंह जो है वो बॉल की तरफ नहीं होता। तो बहुत मेजर फॉल्ट है ये रनिंग की। और आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जहाँ बिल्कुल ही एक बहुत ही मामूली फर्क से रन आउट्स हो जाते हैं, तो बहुत सी चीजें देखने वाली हैं, सीखने वाली हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। जो रनिंग बिटवीन द विकेट की स्किल हैं, इसकी इतनी बारीकियां हैं कि आप उस पर काफी देर बात कर सकते हैं। टच डाउन करने के लिए आपका बल्ला उस हाथ में होना चाहिए जब आपकी आंखें एक्शन की तरफ हों। बैटर अपने पार्टनर के साथ आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉल की तरफ नहीं देखना चाहिए, कॉल पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। चल 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 फादी, चल फादी, वेल्डन वेल्डन फाद, शाबाश शाबाश। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। एक टीम जब 4 डे और 1 डे क्रिकेट के टूर्नामेंट जीतती भी आ रही हो, शाह फैसल आपके ख्याल में क्या इसको कहेंगे? पिछले मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे, ज्यादा रन नहीं बना सके, T20 के फॉर्मेट से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तीनों फॉर्मेट का टर्न अराउंड काफी तेज हुआ है। फर्स्ट क्लास से लिस्ट ए और लिस्ट ए से T20। ज्यादातर नौजवान खिलाड़ी हैं, उन्हें अडेप्ट करने में मुश्किल होती है। लेकिन और चीज प्रेशर भी हो सकती है। आजा आजा, 2 की गोले। वो जो मैचेस खेले गए वो छोटे वेन्यूज पे खेले गए, ज्यादा अटेंशन उन पे नहीं थी। जाहिर है वो सेकंड टियर थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की। ये मेन टियर है। टेलीविजन पे मैच आ रहा है, जो टेलीविजन पे नहीं आ रहा उसकी भी काफी हाइप है और कवरेज है। यंगस्टर्स के लिए उस प्रेशर को मैनेज करना भी ऐसा लगता है कि एक चैलेंज है इस्लामाबाद के। चलो चलो चलो, ये हमें 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 लास्ट बॉल सही करनी है। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन शायद डेरा मुराद जमाली के लिए तो बात की जा सकती है ये, लेकिन इस्लामाबाद में सरमत भट्टी, रोहेल नजीर, अली इमरान तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं सारे, काफी अरसे से नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा ख्याल से उनको ये लीवरेज नहीं दी जा सकती। 16 के बाद 98 पे 6। DM Jamali must be really proud of this effort. They've really put Islamabad under lots of pressure, and now this partnership just building up. 98 for 6 in 16 overs. The target 128 runs. What a match.
Shahid is back. Team Jamali, have a look at the bowlers. Bowling options. Shahid has got 2 overs. Zahoor and Fahd 1 each. Musa. Oh, he's done well. Guided towards third. It's the singles that matters. They got to keep the scoreboard ticking. Salman Butt alongside me. What a game. What an effort by DMJ. It has been a good effort. They've come out and playing against a side which has a lot of exposure at this level and doing well, keeping them under pressure and most of the time staying at top. One very impressive thing I must mention is the captaincy of DMJ so far. This last ball was cut really fine, placed towards the third, and the fielder is finer. So the positions that he has stationed for his bowlers, they have also responded. So the discipline has been good, yes, but the sides that are very young, when they get closer to a chance where they can see victory, that is where they start to panic. And this is what exactly happened. This is what happened over a lot of time with this Afghanistan team. And now this team on this occasion, they've done so well and suddenly their strength became their kind of weakness. That is the fielding. Absolutely. 100 up for Islamabad. Hamad on 32. At the moment, it's all singles for Islamabad. I know DMG has been brilliant, but what about the short selection from Islamabad batters? They're just giving it away too easily, too casually. A few shots from the top order batters, then a run out also into that batting side. It's just not gone their way. And they're clearly struggling. It's up to Musa now. And initially, I thought they're a one batter short. They surely are now regretting not having an extra batter in their lineup. Even a team like DMJ is dominating them at the moment. Ball him! Beautiful delivery. That's a big one. That's the man in form. Hamad was all set, and these celebrations means a lot to DMJ. Salman Butt, what a wicket. Excellent that. What a wicket. And Musa is somebody who can hit big, who has done good in matches like these, in tight situations. He's led his time to victories. And this time around, the bowler hitting the stumps, bowling within the stumps, bowling a good length. And Musa growing across the line. The foot, the front foot is perfectly all right. No problem with that. And see that length delivery, and Musa. Well, what shot that was, I do not know how to tell, but the bowler does a Hassan Ali. He is a Hassan Ali fan. And that's good to see. Imitating your heroes. Musa Khan gone for 9 of 12 he got. 101 for 7 Islamabad. What a day of cricket. 2 nail biters. This one not over yet, and we still don't know which way this game is going. It's just like a seesaw. It's swinging both ways. Now they've been able to break that partnership. It was looking threatening. What a time to bring back your ace bowler. Farmanullah Khan now the next man in. The best of 23. Strike rate 74. Even the 23 will work at the moment if he's able to do it. If he's able to absorb the pressure. What a spell, Salman by Shahid. 2 for 22. At the time when it matters. Can he get one more? Good bowling. Great bowling. On target. Once again, you see presence of mind. If we can see the fielders in the circle over here on our screens, the short mid wicket is up now, and the short cover is cutting the angle. So good captaincy once again, and I hope there is no more commentators' curse, because they deserve all the praise. As things just start to go otherwise. But Shahid has been on song. He's bowled within the stumps. Now the fine leg comes up because 2 balls remain, and the mid wicket goes to the deep corner. Shahid. Well played. 2 is the call. Can they get 2? They're running well. No, says Musa. Oh, there was a misfield. Hamad said no. Beg your pardon. They were putting the pressure on the fielder. 17 overs gone. 102 for 7. There, once again, we see the ball placed between mid-wicket and mid-on. Wanted 2 runs, but they have had so many confusions, so many stutters and misunderstandings that it's still existing. And
We haven't seen a pair from Islamabad who has been on the crease and not had a confusion or a miscommunication. And that also, the credit has to go to the DMJ fielders. Absolutely. They deserve all the praises. 26 runs, 18 deliveries, nerves, pressure. Fahad. Well played, very well played. What are the options? 25 runs, will singles do? Let me go to the other side now and say some good things about the Islamabad batters. Because DMJ have already had enough of me. So Hamad is somebody who came in and struck those 3 boundaries and tilted. And this one has been struck over the head of the bowler and goes for a 1 bounce boundary. So it didn't work this time. I'm glad it didn't for Islamabad, Salman. But that was beautifully struck. Right over the head of the bowler, 1 bounce and over the boundary, beautifully placed. Clarity that he wanted to go big. That's an important boundary. They now require 21 runs of 16 deliveries. Just don't get any better than this. Good batting, very good batting. Who is the call? No, they're not going to get it. No more run-outs. No more run-outs. 108 for 7. Pressure situation. I don't mind a cup of tea, Salman. It helps. It's time for Tapal tea moment. And I'm hoping that he would say only Tapal. Another dot ball. Dot balls are like gold at this moment, building more pressure on Islamabad, who've already lost 7 wickets and require a further 20 runs of 14 balls. A wicket here will do wonders for DMJ. Only if they would be hoping that they had scored 10 or 15 more runs, which they could have easily managed. But they threw away their wickets, DMJ, quite easily, quite cheaply. From 91 for 1 to 127 all out. That was their situation. Hamad on 38. Oh, straight down the ground. Oh, this was a chance. Definitely this was a chance. Not quite jumping at the right time. 18 overs gone, 110 for 7. Timing of the jump, Salman. We saw a couple of catches like these taken yesterday. Ali Majid took one on his second chance, and then Faisal Akram diving to his left, which is obviously his stronger side, but that catch was a wonderful one. Both struck firmly, and this one too actually struck firmly. So for the first time today we see towels being used, suggesting that the dew is out there, and if you take into account that dew has been there, then this effort of DMJ bowlers becomes extra special, and the fielding as well, because these two things become far more tougher when the dew is around. Absolutely. The captain and the bowler making sure they have the right fielders at the right spot. You need your best fielders on the boundary line, on the hot spots. That's another good sign of good captaincy by DMJ, because this is a great opportunity for them to beat Islamabad, who were the champions of Grade 2 4-day cricket. It's good to see this young fast bowler Shahid asking for the fielders. So he knows his own plan. He knows where he's going to bowl. Shahid. Oh, that's beautifully lofted over the head of the fielder. This will do. This will release a lot of pressure. You can tell by the faces. The captain is happy. This will release a lot of pressure from them, definitely. 114 now. Great shot, great pickup. Great placement also. What an inning this is from Ahmad. Timely inning when the team needed it. Beautiful batting. Playing at number 7. Showing great guts, great temperament.
holding the innings together, holding one end strong, wickets falling from the other side, but he has maintained a good head, cool head, picked his spots and good shot selection. He's on 43 at the moment and he needs to be there till the end. Third comes up in the circle. Mid-off goes back, but he's played it towards extra cover. Good cricket. That's all they need. A sane head at the moment. They don't want to be losing wickets at this time, because one more wicket here will put them in a lot of trouble. Especially this man on your screen, Hamad, who's played a blinder of an inning, 44 of 38. What a time to play that inning. What a time. "13 needed, 10 balls left." What a game. What a wow. There's a fielder, there's a fielder. Oh, that's over his head. It's that kind of a day. They need just a little bit of more luck. TMJ. 11 more of 9. Salman Butt can't sit down. The pressure is on him too. It's not bad to be excited sometimes, especially when you see two young teams fighting out a thriller. Especially the Trera Murad Jamali team. They haven't had much exposure at this level on television, playing the national T20 circuit after a long, long time. The long off goes back once again. The third and the point, backward point, are up in the circle. Covers patrolling on the line and shot fine leg now. So there's a deep square, a cow corner fielder over there, deep mid wicket. Long on, deep cover point. Shahid again. That's good batting. Very good batting. They won't mind. Both teams won't mind. 10 needed of 8. As Salman was mentioning earlier, it has been a good day for the captain. He's making sure even now he's continuously talking to the bowler, making sure that every fielder is at the right spot and the right fielder for that spot. I wonder who is kept for the last over, because spinner bowling in the last over mostly isn't a good idea. Oh, that's gone through. That is gone through towards the third boundary for 4. That is what happens when you have third inside the circle. All he had to do was just place it in between the two fielders and get that all-important boundary. Just 6 more runs required now. Hamad moving on to 48 runs. Look at that, just guiding it. Third inside, always going for a boundary. With this field, that wasn't the ideal ball. Shahid having done so well in most of his spell, that ball was a free gift to a set batter like Hamad, who has been very cool and calm. No signs of panic. And he's kept the Islamabad chances alive by staying there and making sure that he's there till the end. Can they get Hamad out? No, he's just playing a very good inning. 2 is the call. 2 is the call. 2 is what they will get. That is a wonderful inning. An inning for the team. Hamad scoring 50 runs off 40 deliveries, playing at number 7. It was not an easy situation when he came in. And great inning. He will remember this for a long, long time. Yes, Hamad has shown great guts and he's shown great temperament as well, and probably is batting a bit low in this batting outfit. He deserves to bat up the order with the game awareness that he has shown and how to play at what situation, and his strokes have been really well picked. The shot selection has really been top class from him. So it's another 4 runs required off the last over, and one more fast bowler to do the honors. The So last now over. They're just checking if there was a short run. Umpire is still checking because he's not given it. He's continuously talking to the third umpire. Still talking because every run matters. This will clear things.
Oh, he's done well. There's no problem at this end. They might have to check the other end also. They need to check both ends. Now he might have to reverse back his decision. So he's got his 50. Now we can celebrate. He can celebrate. Everyone. Islamabad can celebrate. 19 overs have gone. 124 for 7. The way you are celebrating, we'll have to announce a public holiday in Islamabad. Let us win the game first. I just love nail biters. This is what we live for. Great game of cricket. A low-ranked team challenging a big side like Islamabad. Well, it's just beautiful. Nothing bad to live for, especially when you don't have much else. Oh, beautiful. Beautiful change of the pace. Top class bowling. Zahoor. 3 overs for 14. Can he be the man? Can he produce some magic? Can he win the game for DMJ? Back of the hand. Beautiful. That was well disguised, and the batter had no clue of the slow one. Back of the hand. Same arm speed, and that is where he actually disguised it so well, and the batter had no clue of what to do with this. 4 needed. Again, back of the hand. 1 run. Good part is Hamad is back on strike. This is what they want. Regardless of the result, but the inning from Hamad will be the highlight. And this is how he got it. Yet it has been a very good knock so far. So the fielders are right on the boundary. Now if he can just chip one on the leg side, it will be an easy 2 unless the fielders decide to come up at least 10 yards from where they are now. 125 the strike rate. 3 needed. 4 deliveries. Back of the hand again. Sensible batting. Looking for 2. Wait, says the non-striker. Pressure on everyone involved at the moment. It's not easy. It's not easy. 2 needed, 3 deliveries. Now we see everyone coming inside the circle. Just 1 fielder on deep square leg. Everyone else inside the circle. They're gonna give everything they have. DMJ. 126 for 7. 2 needed, 3 deliveries. Farman to face Zahoor. Oh, good bowling, very good bowling. A dot delivery is gold at the moment. Ali, what about a super over? Definitely on. Ready? You want to stay up late? Anything for a thriller. A wicket is what I would like to see at the moment. Get it to the last ball. I don't know what else, but you are getting popular in DMJ at the moment. Definitely. I wonder if anyone is watching there. It's pretty late. 11:20. And 3 balls back, it was happening in Islamabad. 2 of 2. Zahoor. Oh, pull him! That's what I was wishing for. He's got that big wicket. Wow, Wonderful. Ali. That is some wish and that is some granting. In a matter of seconds, you have your wish granted. So it's another wicket. 1 ball to go, 2 runs to get. What a game. And well bowled by Zahoor. He's given only 16 runs away, taken 1 wicket, 1 very important wicket now, and hopefully the front foot will be all right. And yes, it is a perfect front foot.
What a delivery outside the off stump. He probably was expecting the batter to go towards mid wicket, inside edge, big wicket. So it has to be a public holiday in one of the cities tomorrow. So let's see where it goes. Super over on Salman Butt. DMJ against Hyderabad, won by 1 run. They defended 119. They're on the verge of defending again a low total. Just 2 more runs, 1 delivery. I just can't see it. Just can't. All results possible. Anyone can win. A super over is on. And mid-off, just going back a bit. So is that going to be a slower one? Because having mid-on and mid-off back suggests that this one is going to be a back-of-the-hand slow one. Shayan Sheikh has the responsibility to play the last delivery. They want to make sure 2 needed, they don't lose. 1 delivery. Zahoor, oh, he's played it, beautiful shot. That's going all the way towards cover for 4. Shayan Sheikh has done it for Islamabad. What a nail biter we've seen here. Oh, they're disappointed. Keep your heads up. You've played like a champions. But Islamabad is the winner of this game. What a fantastic game of cricket we have just witnessed. There were some nerves in that group. Now they can relax. They won this game by 2 wickets. Well, this was well struck, again providing room to the batter, and who was facing his first ball under pressure, played a fantastic stroke. No chance for the fielder, who was positioned at half position around 15 yards in from the boundary. So a great game of cricket, and Islamabad in the end win by 2 wickets. An excellent display under pressure from both the teams. A lot of credit to Hamad Butt for playing this wonderful knock. The fielder tried his best, Ali. Celebrations in the camp of Islamabad. Raheel, but it's that man Hamad who stayed till the end. That's a match-winning inning. 51 not out. When the team needed it the most, he has delivered. That's what you want to see. He was well supported by Musa and Farman by the end, and that 4 important run by Shan, he's gonna remember it for the rest of his life. Absolutely, Ali. And this is the DMJ bowling card, and all the bowlers putting in great effort. Shahid just in the end, bit expensive, but he bowled his heart out. 26 for 2. Salim Shahid gave away 37 runs off his 4, and Nasir was wonderful. 4 overs, 17 for 1, and so was Zahoor. 4 overs, 20 for 1, and Fahad in the end 4 overs, 26 for none. And this was one of
one of his overs actually, where 3 boundaries came and shift the momentum towards the Islamabad team. And then in the end, Hamad played a special knock. Absolutely, a special knock. But let's hear it from the captain of Islamabad. He's down there with Akil Samar. रुहेल, दिल की धड़कनें अब नॉर्मल हो चुकी हैं, पहले तो ये बताइए, और साथ मुबारकबाद उस गेम को जीतने के लिए, कैसा महसूस करें इस वक्त? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैच हुआ और इन दी एंड हम लोग जीते, खुशी है। हमाद की इनिंग्स को कैसे समअप करेंगे? दरमियान में नर्वी मोमेंट्स भी थे, रनआउट का भी कई मरतबा खिलाड़ी करीब पहुंचे हुए भी, तो उनकी इनिंग्स ने आपको यहाँ तक पहुंचाया? आई थिंक उसने पिछले मैच में भी जो हम लोग हारे थे उसमें भी अच्छा खेला अंडर प्रेशर, और जिस तरह आज भी उसने टीम को लेके चला और फिनिश किया, तो बहुत ज़बरदस्त। आपको जीत के साथ साथ कुछ नेट रन रेट की भी शायद बेहतरी की जरूरत थी, तो दरमियान में स्ट्रेटेजी थी कि छोटे टोटल को देख के तेजी के साथ चेस करने की कोशिश करें, जिसको बाद में चेंज करना पड़ा? जी, जब हम लोग बैटिंग पे गए तो हमारे माइंड में यही था कि एज अर्ली एज पॉसिबल चेस करेंगे, लेकिन हम लोग जो ऊपर के बैट्समैन थे उनकी यही थी कि जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे, लेकिन जब 3 विकेट्स ऊपर से आउट हुए तो थोड़ा प्रेशर पड़ा, तो वो थोड़ा सा हम लोग फिर 4-5 गट्ठे आउट हुए, तो जिसकी वजह से इतना लंबा मैच गया। बड़ा आपका टफ ग्रुप है, शिद्दत से जरूरत थी इस विक्ट्री की, तो आगे कैसे देख रहे हैं आने वाले मैचेस में? अचानक से चांसेस उजागर हो गए। बिल्कुल, बस ये है कि बैटिंग में थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, और फिर इंशाल्लाह हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं कि हम लोग किसी भी टीम को हरा सकते। गुड स्टफ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Yeah, batting is what they need to improve, but this has been a great inning from DMJ. Started off beautifully. Lots of boundaries early on inside 6 overs. Especially the left-hander, he played a beautiful inning through offside. Lots of boundaries being scored. Big hits also, 6s. And then spinners came in and put the break on that run scoring. Big hits continued on the other end, but spinners were really difficult to handle on this pitch. Some average strokes making also, and run-outs also, restricting DMJ to a low total. It has been a great game. The fielding has been good too, and it was the spell of Musa Khan. Got 3 wickets inside 2 overs, wicket to wicket, quick, skidded on to the wickets. Beautiful bowling. And then also the fast bowler getting wickets. They've been spot on with the line and length, bowling within the stumps and getting the wickets, helped by some poor shot selection. Musa was the star in the bowling lineup. Middle stump, rooted
That's how it was done from Islamabad. A beautiful cover drive, an important cover drive to win the game for Islamabad. So close yet so far for DMJ. What a fantastic win for Islamabad on the very last delivery of the game. That's how the match summary stands. Murad Jamali batting first, 100. Umair getting 4, Musa getting 3 wickets. And in reply, Islamabad chasing down this score on the very last delivery of the 20th over, 130 for the loss of 8 wickets. But most importantly, they won this game by 2 wickets. Hello, good evening and welcome to the National Bank Sports Arena. What a day of cricket we have seen. 2 nail-biters. But the last one was the game that we're going to talk about with my guest Emmer Said alongside me. What a day of cricket, Emmer. But हम बात करेंगे सेकंड गेम के बारे में, DMJ के बारे में बात करेंगे कि बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है. काफ़ी क्रेडिट जाता है उनको कि इतना लंबा मैच ले गए बड़ी टीम के अगेंस्ट. बिल्कुल, ऑल द क्रेडिट गोज़ टू डेरा मुराद जमाली. बहुत से हमने ये डिस्कस भी किया है, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं उनके जो इस स्टेज पे बड़ी पहली बार खेल रहे हैं. इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन एक ऐसी टीम को, इस्लामाबाद जैसी टीम को, जिसमें अगर आप नाम गिनने शुरू करें तो भरी पड़ी हुई तजुर्बेकार प्लेयर्स है, उनको बहुत ही टफ टाइम दिया. बहुत ही अच्छी कप्तानी भी रही. हम बात करेंगे DMJ के कप्तान के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फील्ड सेटिंग की, अपने बॉलर्स को चेंज किया, तो काफ़ी क्रेडिट जाता है. वो मैच तो नहीं जीत सके, लेकिन क्रेडिट काफ़ी देंगे उनको. जी हाँ, बिल्कुल. जो फाइटिंग स्पिरिट उनकी नज़र आ रही थी, हाँ, ये ज़रूर आप उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा सकते हैं. फील्डिंग लैप्सेस जहाँ उन्होंने किए, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लैप्सेस किए, लेकिन उसी जगह पे आप ये भी देखिए कि बड़े इंपॉर्टेंट रनआउट्स भी किए उन्होंने. तो जाहिर है स्ट्रेटेजिकली और थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस शो कर रहे थे, लेकिन हाँ, एज फार एज फाइटिंग स्पिरिट गोज, ब्रिलियंट वर्क. जीत जाते तो डेफिनेटली पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा ऊपर आ जाते, 4 पॉइंट्स हो जाते DMJ के. नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे इस ग्रुप की कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसमें कराची वाइट्स हैं, लाहौर ब्लूज़ है, इस्लामाबाद, डेरा मुराद जमाली और हैदराबाद. 4-4 पॉइंट्स हैं टॉप 2 टीम्स के. और अगर कहीं अहमर ये मैच डेरा मुराद जमाली जीत जाता तो ये भी 4 पॉइंट्स पे आ जाते. जी हाँ, बिल्कुल. इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जो अपने टूर्नामेंट जो है वो हनीफ मोहम्मद कप और चैंपियनशिप दोनों जीतती हुई आ रही है. एक ऐसी टीम के लिए अचानक इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, पिछले मैच में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, हार गए वो मैच, लो स्कोर किया उन्होंने. और आज भी जो है वो जो अप्रोच उनकी मुझे नज़र आ रही थी, आई कैन अंडरस्टैंड, दे वर गोइंग फॉर क्विक रन्स, ताकि वो जो है वो एवरेज अपनी और रन रेट को बेहतर कर सकें. लेकिन आई थिंक दे शुड हैव कम अप विद सम कन्वेंशन. यू नो, एंड में क्योस हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था इतनी एक्सपीरियंस टीम के लिए. एब्सोल्युटली. मैच तो नहीं जीत सके, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा वो ज़ुबैर की इनिंग रही. बहुत ही शानदार इनिंग खेले हैं ज़ुबैर. अब हम चाहेंगे कि आप ज़रा उसके बारे में बात करें कि जिस प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने ये बैटिंग की है. जी हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग की है और चंद ही तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, उनमें से एक ज़ुबैर जो कि एक 2014 में एक 100 भी कर चुके हैं T20 क्रिकेट में, और आज फिर उन्होंने एक सीनियर के तौर पे बिल्कुल अपना किरदार निभाया. और जो ये टोटल जहाँ तक डेरा मुराद जमाली पहुँची थी, उन्हीं के मरून मिन्नत था. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा. और दूसरी जानिब हमाद का जिक्र किए बगैर तो ये शो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि शानदार इनिंग खेली उन्होंने और मैच विनिंग इनिंग खेली और एंड तक रहे, नॉट आउट रहे, मेक श्योर किया कि मैच फिनिश करके जाएं. जी, अगर आप मुझसे पूछें तो हमाद के अलावा और कुछ बात ही करने को नहीं है इस्लामाबाद की इस परफॉर्मेंस में. सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये मैच जितवाया है, वह अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल में एक वक्त में आ गई थी अपनी इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग की वजह से. तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दिस विन. एब्सोल्युटली. बहुत मुश्किल होता है जब आपके इर्द गिर्द विकेट्स गिर रहे हो और एक यंग प्लेयर जो पहली बार इतनी बड़ी स्टेज पे खेल रहा हो, इतने नर्व्स को कंट्रोल रखना और मैच फिनिश करना. बिल्कुल. टैलेंट के साथ साथ जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये है कि आप टॉप लेवल पे किस तरह के स्टेज पे किस तरह अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हैं. और एक अच्छे प्लेयर में और एक आम से प्लेयर में यही फ़र्क होता है कि वो अपनी नर्व्स को किस तरह कंट्रोल करता है और बड़े स्टेज पे किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंसेस को सामने ला पाता है. एंड ही डिड इट टुडे. एब्सोल्युटली है. अमर, नज़र डालते हैं अब कल के दिन पे कि कल कौन से मैचेस होने वाले हैं. ज़रा देखते हैं कि कल इस कदाफी यहाँ पे कौन से मैचेस खेले जाएंगे. लाहौर वाइट्स का मैच होगा पहला. काफ़ी बड़े स्टार्स हैं लाहौर वाइट्स की टीम में भी. उनका मैच होगा क्वेटा के साथ. लाहौर वाइट्स में अहमद शहजाद होंगे, नज़र आएंगे, उमर अकमल नज़र आएंगे, काफ़ी बड़े स्टार्स हैं. और दूसरा मैच खेला जाएगा रात के टाइम पेशावर और लाड़काना के दरमियान. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी पेशावर.
वो डेफिनेटली मोस्ट प्रॉब्ली टॉप कंटेंडर्स में से है वो आगे जाने के लिए। पेशावर भी पिछले सारे टूर्नामेंट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करते हुए आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इस बार भी वो ढीला नहीं छोड़ेंगे किसी भी अपने किसी भी एस्पेक्ट को। और आई एम श्योर कि इट विल बी अ लवली डे टुमारो। सारे मैचेस जो हैं बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं होने वाले कल। एब्सोल्युटली। अमर काफ़ी लेट हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल लेट फॉर अस। और आज के लिए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और कल एक नए दिन के साथ, नए मैचेस के साथ, एक्साइटिंग क्रिकेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।